Hello, 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 check, hello, 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 check, hello, थोड़ा बड़ा हल्का सा हेलो 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 हाँ हेलो 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 All right then, welcome to the live coverage of the match number 19 of Mauka 365 Tussle Premier League Season 2. This is Sunil Roy. Once again, I would like to welcome everyone out here and also our viewers who are watching us live from YouTube. We are at NL Sports Ground at the Hisar East. Pleasant environment to play a beautiful game of cricket. Excellent shot. This is pressure releasing shot played by Pradeep. He was struggling till now. Had scored only single of 9 deliveries, but this one, it didn't have that much of pace to trouble the batsman, and it was in his slot, and he goes aerial, couple of bounces and into the fence. The first boundary coming from his blade, and the score for game changers is 15 for none. Excellent comeback delivery. This by Shabazz. So as we mentioned, this is match number 19 of TPL, Tussle Premier League Edition 2.
is in the air. Long off, getting underneath it. And takes a good catch. Once again, a fuller length delivery outside the off. Batsman sensed an opportunity to score a boundary of it, but this time miscues it completely. An excellent catch taken by the fielder at long off, and Shahbaz from Black Knights has drawn the first blood. Pradeep Dubey has gone back to the hut after scoring 5 of 12. And it's 15 for 1 for game changers. They are up against Black Knights today, where the toss went in favor of game changers, and they had no hesitation to bat first. So they would be disappointed with the kind of start they have got so far. We are into the 4th over. Score is 15 for 1. And this is very crucial match if I talk about the perspective of Black Knights. As we mentioned earlier, Black Knights, they are a good team. They have some explosive batsmen in their batting lineup and in their bowling lineup as well. They are a good team, good package, but they have played this competition so far with no great success, no great luck. And this contest is very important for them. They are looking for their first victory in the Tussle Premier League 2023 so far. New batsman is in. Imtiaz Sheikh. He's up against the Shehbaz. Lovely delivery. Fuller length delivery once again, and good from Imtiaz. Leaning forward and playing it with the soft end. Full toss delivery. And he has driven it down to the long on to take a single and get off the mark. 4 overs gone. And game changes are 16 for 1. So credit goes to both the bowler from Black Knights, bowling with the knee ball, bowling in a tandem here, and they haven't leaked runs. Sagar will continue. And he looked in a complete control right from the ball one. Beat the first over, beat the second over, and he is bowling his third over. Started off with a maiden over, which is very rare to see in a T20 game. Excellent delivery and very well played. Played it late, just guided it. It races away right to the fielder at third man, and that's a boundary for the Imtiaz. Excellent delivery and very well played. Played it late. Hello. Excellent delivery and very well played. Once again, a shorter length of delivery. Batsman waits for it, playing it late. And it's good to see from the batsman.
one strategy to play against the left-hander. Every time the bowler shortening his length, bowling it just a couple of yards before the good length delivery. This one was a fuller one, and batsman just using his wrist, playing it on the onside. Talking about the field restrictions, three fielders can be seen protecting onside, one square leg, a mid wicket. Both the fielders are inside the circle. A long on can be seen. Another half volley delivery, driven straight to the cover for no run. So bowling is third over. Sagar looking a bit tired. He hasn't bowled with that pace in this over, but courtesy, his length, his line, that he has been able to contain the batsman in this over so far, except that one boundary where a fielding effort could have been put, but they will take it. A boundary for game changers. Excellent delivery once again. Only a boundary coming in this over. 5 overs gone. 20 for 1. So after 5, it's 20 for 1, and we're going to have a change in end. And one can see ball is in hand of the man with the golden arm, Harpreet Bright. Hello, hello. What do we say about Harpreet Bright? Hello. So far, he had a great tournament. Hello, hello. In but so in his 5 matches he has played so far, have taken 13 wickets. I beg your pardon. It's 11 wickets, not 13. And the very first delivery, he bowled a full toss to the right-hander. And Arbaz just using the wrist, playing it on the onside to take a single. Lovely delivery. And it's not going to be easy task for the game changers to take Preet on. He's a brilliant bowler. Look at that. His releasing point is key in his bowling. The variation he has when it comes to the length is tremendous. Shorter length of delivery, a half tracker in fact. Batsman goes deep in the crease and flat batted it straight to the fielder at long on. Shikhar running to his left and limiting the run only to 1. 22 on the board. We are into the 6th over.
big shot. Arbaz, he likes to play his shot. And as we mentioned, the man with the golden arm, Harpreet Bright, he doesn't take time to strike. Once again, in his very first over, he gets the read of the big man, Arbaz. A destructive batsman from Game Changers goes cheaply in this contest. And that's the second wicket down for Game Changers. Both the openers are departed. Big shot. So if you talk about the bowling analysis of Harpreet Bright, what makes him so successful? So the one thing is we mentioned his releasing point. He releases the ball above his head, and that allows the spinner to get extra purchase. And another thing is like he doesn't spin much. He attacks the stump, and it's a key in the T20 format. Could have been 2 and 2. This one ball, a bit slower one in the air. Batsman waits for it, was looking to cut it away on the offside, inside edge. And the other day, the ball would have rattled the stumps. Not the... Six overs gone, 22 for 2. Not the kind of start Game Changers captain, hello, he would have hoped for when he won the toss and decided to bat first. But credit goes to Black Knights bowler. They have been spot on right from the ball one. Hello, hello. Seventh over in progress, and it's Sagar, the medium pacer. He has switched to a spinner now, bowling left from around the sticks to the right hander. A pacey delivery down the leg. Wicketkeeper fumbles. And that allows the batsman to cross over for 1. 2 runs will be added to the tally of Game Changers, 24 for 2. So there is no grass on this wicket, a flat track it is. Lots of soil and spinners. If we look at the wicket takers list, the spinners have been successful on this wicket, and that could be the one reason why Sagar why he has opted to bowl as a spinning.
Hello. So far, if we see in this over, the length, it's quite fuller one. He hasn't bowled any good length delivery or a shorter length delivery. He wants the batsman to come forward to play him through the V. And this time, once again, Imtiaz was waiting for it, letting it come to him, looking to guide it. There is no third man, and he wants to find that gap. Full toss delivery, but they will have to settle only for one. So even when he bowled as a spinner, conceded only 5 runs, and of a brilliant spell from Sagar, in his 4 overs, he has given only 13. So far, if we have seen Sagar, hello. So Sagar is the one bowler from the Black Knights who has started the innings, and also the captains have asked him to bowl in the death over as well. But today, he has finished his quota of bowling 4 overs within 7 overs of game. This is one strategy from the Black Knights. तो 8वां ओवर गतिमान है और ब्राइट है, गेंदबाजी के लिए जारी रखेंगे अपना दूसरा ओवर। और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर शिखर द्वारा। फुल टॉस की ये गेंद थी बल्लेबाज के लिए और उसे डाउन द ग्राउंड खेला था। गेंद तेजी से ट्रेवल कर रही थी और इस आउटफील्ड की हम क्या ही बात करें, बहुत ही तेज है ये आउटफील्ड, लेकिन उससे भी तेज रहे खिलाड़ी इस बार। शिखर अपने बाएं तरफ दौड़कर गेंद को रोका और बल्लेबाज को भी रोका मात्र 1 रन पर। ये बेहतरीन शॉट घुटनों पे गए और कोई भी मौका नहीं खिलाड़ी को गेंद को रोकने का। जी कहा जाता है अगर आप स्पिनर के खिलाफ स्वीप शॉट खेल सकते हैं ये बेहतरीन शॉट तो आप स्पिनर के खिलाफ सक्सेस हो सकते हैं। गेंद को रोकने का बहुत कम बल्लेबाज हैं जो कि बहुत बढ़िया स्वीप खेलते हैं। बढ़िया बल्लेबाजी ये, जब आपके सामने एक सफल गेंदबाज हो, एक ऐसा गेंदबाज जो कि अब तक उसका दमखम अपना जलवाल बिखेरने में कायम रखा है। हरप्रीत ब्राइट अब तक दूसरे नंबर पर है विकेट टेकिंग लिस्ट में। अगर हम बात करें तो 12 विकेट लिए हैं, 12 विकेट चटकाए हैं और एक बार फिर बल्लेबाज की जान हलक में हो सकती थी। जिस प्रकार से अपना लेंथ वेरी करते हैं, अपना पेस वेरी करते हैं, वो देखने लायक होता है। स्टंप्स टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं और जब आप स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं तो वो नहीं फ्लाइटेड डिलीवरी, एक मौका था जी, मौका नहीं, ये क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। शानदार गेंदबाजी, एक बार फिर ललचाया था बल्लेबाज को, कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, लेकिन ये खराब शॉट सिलेक्शन मैं कहूंगा। जब गेंदबाज ब्राइट जैसा हो तो आपको अच्छे गेंदबाज को अच्छे गेंदबाजी की सम्मान करना चाहिए, लेकिन कई बार देखा है बल्लेबाज ईगो पे खेलना पसंद करते हैं, वो चैलेंज लेना पसंद करते हैं। उस चैलेंज को स्वीकार किया था गेंदबाज ने और जीता भी। इम्तियाज जो कि अब तक
शुरुआत अच्छा किए थे अपने पारी का, लेकिन कुछ समय से जूझ रहे थे टाइमिंग को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, और उनके पारी का अब अंत होता हुआ 9 रन बनाकर वो पवेलियन वापस। 8 ओवर का खेल हो चुका है पूरा और स्कोर है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मौका 365 टसल प्रीमियर लीग 2023 दूसरा अध्याय ये खेला जा रहा है एनएल स्पोर्ट्स ग्राउंड दहिसर ईस्ट में। मैं सुनील रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मैदान में प्रस्तुत जितने भी हमारे समर्थक, हमारे दर्शक और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप सभी का स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। ये आने वाले महीनों में, हफ्ताओं में एक से एक मुकाबले खेले जाने बाकी, बहुत सारे मनोरंजन होना बाकी। आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर्स का, टीएमएस हॉलीडेज, हमारे एनर्जी ड्रिंक्स स्पॉन्सर एनाजॉल का। तो चलिए अब मैच की तरफ ध्यान देते हैं। 8 ओवर में बनाए हैं 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और अब गेंदबाजी में बदलाव। बढ़िया शॉट, एक बार फिर छोटी बाउंड्री है। फाइन लेग और स्क्वायर लेग के रीजन में उस छोटी बाउंड्री का फायदा उठाते हैं बल्लेबाज जयन, जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। और क्योंकि स्पिनर्स अटैक पे हैं तो उन्होंने अपना बढ़िया गेंद। शुभम एक और स्पिनर ब्लैक नाइट्स की गेंदबाजी क्रम में, बॉलिंग यूनिट में। फुल टॉस की ये गेंद और इसे टाइम बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे बॉटम एंड ऑफ द बैट। और शुभम अगर कुछ कदम पीछे अपने आप आते तो ये कैच पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट भी, लेकिन सीधे कवर के खिलाड़ी के हाथ में, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। तेज गति की ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई, एक बार फिर स्वीप करने का प्रयास, लेकिन बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं। गेंद और बल्ले का पैड पर जाकर टकराई। अपील की गई थी लेकिन नकारा उसे अंपायर ने, और क्योंकि उस गेंद को फील्ड करने के लिए कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था, 1 रन तोड़कर पूरा कर लिया है। 1 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 36 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, 9वां ओवर गतिमान। अब तक तारीफ करनी होगी ब्लैक नाइट्स के गेंदबाजों की, जो कि अब बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है सभी गेंदबाजों द्वारा। बड़े शॉट खेलने का, आसान रन बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है, बांध कर रखा है पहले ही ओवर से। जो कि पहला ओवर अगर हम बात करें तो क्या शानदार पहला ओवर फेंका था सागर ने। जैसे कहते हैं ना कि बहुत जरूरी हो जाता है, जिस प्रकार बल्लेबाजों के लिए अच्छी शुरुआत देना, गेंदबाज के लिए भी उतनी ही जरूरी अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत देना। बढ़िया गेंद, एक डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए यहाँ पर गेंदबाज शुभम। अब 9 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। 9 ओवर के बाद अब स्कोर है 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा। तपवादी धूप में खेला जा रहा है ये मुकाबला। तो एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव देखने मिल रहा है। यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आए हैं
एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। प्रवीण गेंदबाजी कर रहे हैं, एक स्लिप देखने मिल सकता है। वहां पर कप्तान हरप्रीत राइट स्वयं अपने आप को पोजीशन किया है स्लिप में। रिस्टी स्पिनर है, लेग आर्म स्पिनर है, लेकिन धीमी गति की ये गेंद, हाफ ट्रैकर की ये गेंद थी। काफी समय मिला बल्लेबाज को, बैकफुट पे जाके इसे खेल दिया है काउ कॉर्नर के रीज में, माफ कीजिए स्वीपर कवर के रीजन में। बहुत ही बढ़िया शॉट जयंत द्वारा, बहुत ही बढ़िया लय में अब तक बल्लेबाजी किए हैं। और अब इनकी बल्लेबाजी, इनका पारी, लंबी पारी खेलने की जरूरत। बढ़िया कमबैक यहां पर प्रवीण द्वारा। पहली गेंद अगर हाफ ट्रैकर थी तो उसके बाद अपने गलती से सीख लिया, इस गेंद को बेहतरीन लेंथ पर गेंद फेंकी थी और बल्लेबाज ने इसे खेला था। एक रन के लिए ये बढ़िया गेंद, एक बार फिर मौका बन सकता है, मौका है। बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील की जा रही है। गॉड बिहाइंड का यह अपील हो रहा है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन में कमी नजर आ रही है यहाँ अंपायर्स के बीच। दोनों ही अंपायर सब आपस में सलाह मशवरा करते हुए, डिस्कशन जारी है। अपील की अगर बात करें, ब्लैक नाइट्स की अगर बात करें तो वो तो जश्न मना रहे हैं, हडल से ले लिया है कप्तान ने। उनको यकीन है कि बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था, कैच लपका गया है। बहुत ही विश्वास भरी अपील, अभी भी दोनों ही अंपायर अपना समय लेते हुए मनोज हैं बल्लेबाज। और ये निर्णय है अंपायर का, आउट का इशारा। तो बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था, ऐसा दोनों ही अंपायर का मानना है। और सफलता प्राप्त करते हुए प्रवीण, एक और झटका लगता हुआ गेम चेंजर्स को। मनोज मात्र एक रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए और इस विकेट के बाद अब गेम चेंजर्स की पारी लड़खड़ाती हुई दबाव में। और समय हो चुका है अब एनर्जॉल ड्रिंक्स ब्रेक का। और बल्लेबाज ने इसे खेला था। ये बढ़िया गेंद का फिर मौका बन सकता है, मौका है। तो मनोज के आउट होने के बाद अब बल्लेबाज करने आए हैं मोहम्मद शरीफा।
जो कि बहुत ही चाहते हैं लोगों के बीच। टसल प्रीमियर लीग 2023 ये दूसरा अध्याय खेला जा रहा। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्राइट, वाइब्रेंट पर्सनालिटी है इनकी, मोहम्मद शरीफ की। और पहली ही गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी थी और बहुत तेजी से बल्ला घुमाया था, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं। और शॉट को खेलने के बाद अब अपना बल्ला चेक करते हुए, बैट चेक करते हुए, बॉटम एंड ऑफ द बैट। तो 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए, और अब जरूरी है गेम चेंजर्स को एक साझेदारी की। बढ़िया शॉट यहाँ पर जयंत द्वारा। एक और फ्लाइट डिलीवरी थी, बहुत ज्यादा गति नहीं थी। उस गेंद का इंतजार किया, काफी समय से इस शॉट को खेलने का प्रयास कर रहे थे जयन, और आखिर में उन्हें कामयाबी प्राप्त होती हुई। कोई भी खिलाड़ी वहां पर नहीं था पॉइंट और थर्ड मैन के क्षेत्र में। एक बहुत बड़ा गैप था स्लीप, और जो इसके पहले फील्डर था बैकवर्ड पॉइंट पे, अब उसे अंदर बुलाया जाता हुआ। 4 रन बटोर लिए हैं। 4 रन के बाद अब गेम चेंजर्स का स्कोर है 46 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, और आखिरी गेंद में अंदर की तरफ लाई और गैप ढूंढने में कामयाब। गेंद तेजी से जा रही है सीमा रेखा के 4 रन के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी जयंत द्वारा। इस ओवर की और आखिरी गेंद फील्ड के अनुसार अंदर की तरफ उड़ाई और बल्लेबाजी गैप करते हुए ढूंढने में कामयाब। दो गेंद खिलाड़ी तेजी को से जा अंदर, रही है बैकवर्ड सीमा पॉइंट रेखा इसके के पहले थे, पार। उस पॉइंट के खिलाड़ी 4 को रन के लिए 30 गज के अंदर बुलाया था। तो मात्र 4 खिलाड़ी थे ऑफ साइड में। अगर इस गेंद के पहले की बात करें तो लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थे, एक कवर के खिलाड़ी और पॉइंट के खिलाड़ी जो कि 30 गज के दायरे में, और एक स्लीप। और जब आपके पास इस प्रकार की फील्ड सेट हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप ऑन साइड कहीं ना कहीं मिडल और लेग स्टंप पे गेंदबाजी करेंगे। लेकिन चूंकि अपने लेंथ से, अपनी लाइन से और खामियाजा भुगता वहां पर गेंदबाज ने। और 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 50 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। तो 10 ओवर के बाद 50 रन 4 विकेट। और ये जो बीच के जो ओवर्स है, यहाँ पर हमने कई बार देखा है ब्लैक नाइट्स अपना मोमेंटम खो देते हैं। और कहीं ना कहीं ये मुकाबला बहुत ही जरूरी उनके लिए जीतना है। इस मुकाबले को अब तक कोई भी जीत उन्हें हाथ नहीं लगी है। तो चाहेंगे कि जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन रहा है अब तक गेंदबाजी को लेकर, अगर हम बात करें तो उस शुरुआत को, उस मोमेंटम को कायम रखना होगा। गेंदबाज है शुभम, गेंदबाजी कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज एंड से। और पहली गेंद, लेग स्पिनर हैं ये, लेकिन ज्यादा लेग स्पिनिंग डिलीवरी करते नहीं है। गूगलिंग ज्यादा करते हैं, अंदर की तरफ गेंद ज्यादा लाते हैं। बढ़िया शॉट इसे खेल दिया है ऑफ साइड में।
फुल टॉस की ये गेंद, लेकिन बल्लेबाज नाखुश होंगे। एक मौका था उन्हें बड़ा शॉट खेलने का, बाउंड्री अवजीत करने का उस गेंद पर, लेकिन उन्होंने खेल मारा सीधे डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथ में, जो कि बाउंड्री पर तैनात है। गेंद हवा में और बेहतरीन शॉट, बेहतरीन टाइमिंग यहां पर जयन द्वारा। छोटी बाउंड्री है कवर के क्षेत्र में, और एक कवर के खिलाड़ी 30 गज के दायरे में, उनके 10 या 15 गज पीछे ही बाउंड्री है, और गेंद सीधे बाउंड्री कुशन को टकराती हुए 6 रन बटोरते हुए पहला मैक्सिमम। एक और खराब गेंद, मौका बन सकता है ये कैच लपकने का, बदला ले सकते थे गेंदबाज, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण वहां पर। काफी समय था खिलाड़ी के पास उस गेंद को नीचे, गेंद के नीचे आने का, लेकिन संतुलन नहीं बना पाए। जीवन दान मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाज को, और उस जीवन दान के साथ 4 रन भी। 11 ओवर का खेल पूरा, स्कोर हो चुका है 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और जयन 221 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए महज 14 गेंदों में बनाए हैं 31 रन। ब्राइट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपना तीसरा ओवर लेकर आए हैं। अब तक 2 ओवर में 8 रन, माफ कीजिए 9 रन देकर 2 विकेट झटके हैं। बढ़िया गेंद, टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आती हुई। और एक खास बात और है हरप्रीत ब्राइट की गेंदबाजी में, कि इनकी गेंदें जो होती है ना, स्किड कर कर आती है टप्पा गिरने के बाद। जब मैं स्किड गेंदबाजी की बात करता हूं स्पिनर्स के लिए, तो अनिल कुंबले का नाम जहन में आता है। एक ऐसे लेग स्पिनर वो भी थे कि बहुत ज्यादा बड़ा स्पिन नहीं कराते थे, लेकिन उनकी गेंदें जो थी स्पीड होती थी, तेजी से आती थी टप्पा गिरने के बाद। और लेजेंड ऑफ द गेम, बहुत ही सफल, सबसे सफल अगर मैं कहूं भारत की तरफ से, अनिल कुंबले। ये बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक डिलीवरी यहाँ पर ब्राइट द्वारा, और उतने ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाज ने उस गेंद को खेला। खराब गेंद पर बाउंड्री बटोरा, अच्छी गेंद को सम्मान दिया, और ये बढ़िया अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है। शरीफ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, आज जिम्मेदारी उनके कंधे पर। हाफ टैकर की ये गेंद जरूर थी, अपना जो वेट है उसे ट्रांसफर किया था, बैकफुट पे जाके इसे कट करने का प्रयास था। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। ये बढ़िया कॉन्टेस्ट चल रहा है हरप्रीत ब्राइट और मोहम्मद शरीफ के बीच। बढ़िया क्रिकेट, इस गेंद को ढकेला था ऑफ साइड में। जब तक कवर के खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करते, गेंद को लौटाते, दोनों ही बल्लेबाज अपना छोर बदल लिए थे। 1 रन पूरे कर लिए थे, स्कोर हो चुके 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब ये साझेदारी पनपती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। खराब गेंद, और कोई भी मौका नहीं वहां पर मिड विकेट के खिलाड़ी को उस गेंद को रोकने का। धीमी गति की ये गेंद, हाफ ट्रैकर की ये गेंद बहुत जल्दी ही
लेंथ को पिक कर लिया था, पोजीशन में आ गए थे उस पुल शॉट को खेलने का। बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले का, खराब गेंद और दूसरा सिक्सर लगता हुआ जयंत के बल्ले से। 12 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। Akash has been brought into the attack and he starts off bowling a high full toss delivery to the right hander, and he had played it on the onside for a single. Now this partnership looking dangerous. 35 of just 16 balls. Good delivery coming back into the right hander. Good use of the wrist, clipping it on the onside. Another single added to the tally. These are some very crucial overs, the middle overs. So the momentum was with the Black Knights, but last few overs, 2 or 3 overs, game changers have pulled the things strongly. Good bowling. These low full tosses, they are not easy to put away. And Akash Kawa is bowling with some strategy here, bowling with some plan, not giving the batsman anything to free their arms to play the big shot. Has conceded only 3 singles so far. Driven down the ground, and once again long on was in the business, running to his left quickly. So 4 singles have come in this over so far. Batsmen have tried to play a big shot, but the good thing from the batsmen, they haven't gone aerial. Very good shot. That came quickly to the batsman with a very minimal footwork. He played it off the back foot through the cover, only to get one. So 5 runs came in that over. 13 gone. 80 for 4. So as we mentioned earlier as well, Black Knights, they have been brilliant team, but playing with no great success, no great luck. And this is very important game for them. They have to win and gain the momentum going forward in this tournament. Talking about the game changers, this is third game for them. They have won one, and the next one they got defeated.
So this is gonna be a good contest, that's for sure. Two good teams locking horns against each other. Batch number 19, TPL 2023. शहबाज है ना? चलता है वो। A cracking sound of the bat and no stopping that. Or has it been stopped? Yes, it has. It's Akash who made some good distance, covered some good distance, sprinting to his right. Excellent fielding effort. Off the back foot, fielder at point. Single denied. Good call from both the batsmen. They need to be at the crease for some more overs. Whereas Black Knights, they need to get rid of this partnership. They have to get a breakthrough. Driven hard. And this is not good to see. It was traveling so quickly. Shehbaz is looking in a pain here. This is not good to see. So Shehbaz, he is walking off. And it could be a big blow for Black Knights. Oh, is he coming back here?
So yeah, it's confirmed he's walking off, and it's as we mentioned, could be a big blow for Black Knights. He's a good bowler and also brilliant with a bat, an all-rounder, and we hope he recovers from that injury and comes back to bowl later half of this inning, or maybe he can even bat. So the change in bowling to finish off that over from Shehbaz. We have Shikhar here. Three balls to bowl in this over, and it has been drilled down the ground. Long off, he tried his best to stop that ball with his foot, Balls to bowl in this over, and but it the has ball been wins the race drilled against down the him. ground. It's a boundary for Jayan. Balls to bowl in this Boundary over, number 6 and, for him. It has been drilled down the ground. Almost chopped on. Inside edge. Sagar is after the ball. And ball goes over the ropes. Back-to-back boundaries for Jayan. This one came with some luck. Almost chopped on. Inside edge. Sagar is after the ball. 47 of just 21 balls. Good delivery. A quicker one, and was shipping away for the right hander. Dot ball to finish off. 14 overs gone. 89 for 4. Very, very important partnership this from the game changers between Mohammad Sharif and Jayan. With the batsmen, they have put on 48 together of just 27 balls. Akash will continue, and he has bowled a half volley delivery to Sharif. It was into his arc, into his zone, and with a strong bottom hand, he has sent it over the ropes. So one bounce into the fence for 4. What a shot! It was hit firmly. Straight to the stumps at the non-striker's end. What a shot. It was Now both the hit batsmen, they are well set and they are timing it beautifully. Shimish down the track, goes aerial, goes big, and it's a half century for Jayan. 53 of just 23. What an inning this has been. Just when the other batters from game changers, they were clueless. They had no answers against the quality bowling from Black Knights. It was this man, Jayan.
who took their bowlers to the cleaners, and right from the ball one, he has looked into a complete batsman, played some brilliant strokes in his inning. And with that maximum, it's 100 up for game changers. 100 for 4, 14.3. Right arm around the sticks is in the air. It has been racing away to the fence as well. No fielder there. So Jayan has decided to take on Akash, to take on the bowlers. This is turning out to be expensive over so far. 15 came. Let's it go. Let's it go to the keeper. Way down the leg. 105 already on the board. 15th over is in progress. The partnership of 64 of just 31 ball. This is good bowling. Good comeback by Akash. Right into the block hole. And batsman just played it, blocking it for no run. Across the line. High and handsome. A full toss delivery, and he has smoked it over the mid-wicket for a maximum. And of a big over. 22 coming in that over. 15 overs gone. 111 for 4. Full toss delivery and across the line. Brilliant batting by Jayan. 63 of just 26 balls. 8 boundaries, 4 maximum. Batting with a strike rate of 242. Yeah, you heard me right. 242 is the strike rate for this man. Nelson is the score after 15. Last 5 overs of this inning remaining. And from here on, game changers, they would be hoping to get at least 50 or 60 to get to the total of 160 or 170, which could be a good score. 111 for 4 after 15. The last 5 overs will be bowled from the media end, and Praveen will be bowling the 16th over. Second over for him.
Excellent delivery. Played it with the soft hand. Straight to the fielder at fine leg. No run taken. Black Knights, they need a breakthrough here. Is in the air. And it has gone the distance. And it's time for Mohammad Sharif to rise on the occasion. Went on his knees, the slog sweep. And it has gone the distance. 117 for 4. The partnership of 76 of just 35 balls. Another Friday delivery. Opportunity. 3 fielders went for it and ball lands into no man's land. Delivery. Some miscommunication can be seen between the fielders and 3 fielders went for it. And both the ball batsmen. lands They into scamper no for 2 man's runs, a land. couple of runs for them. 119 for 4. Beautifully played. Once again, timed it beautifully, but couldn't find the gap. Straight to the fielder at cover. But they couldn't stop the batsman to take one. Came down the track. And it has gone out of here. Probably the longest one so far in this inning. What a power hitting this Came down is. the track. And it has gone out of here. Probably the long. Jayan, he is on a song here. Another full toss. And this time, same result but different region. This time over the square leg. Back to back maximum and of a big over. 21 coming in that over. Another 16 full gone. toss. 132 for 4. Same result but different region. This time. What a turnaround we have seen here. Excellent from the game changers. They are playing a brand of a cricket here. They are doing a justice to their team's name. Game changers. They are literally changing the game here. Last 3 overs and game changers have scored 52. Bright to bowl the last over of his spell.
And this is gonna be interesting to see how well this batters tackle Bright. He's not an easy bowler to take on. He will not give free deliveries, easy deliveries. Goes up and falling just short of the fielder at long off. As we just mentioned, scoring big runs against Bright, it's not an easy task. Good sound of the bat, but finds the fielder at cow corner. A misfield there, but the batsmen are happy with one. So only 3 singles have come in this over. But Black Knights, they need a wicket. Can Bright once again strike for his team? He has already got 2. Shorter delivery. A flat hit. Jayan, he is unstoppable at the moment. A rare loose delivery from Bright. Shorter delivery. A flat hit. With that maximum, it's 100 and partnership between the batters. 100 of just 43 balls. Quicker one. Once again on his knees. And the ball racing away to the fence. 145 and Jayan on 86 of 31. Quicker one. Once again on his knees. He has only 4 balls to face in his inning. Can he finish off with a 3-digit mark? Lovely delivery. Slower one in the air, enticing the batsman to come forward. Mistimes it back to the bowler for no runs. 17 gone. 145 for 4. विकेट मिल सकता है सर कभी कभी बैट्समैन उसके पास भी अभी कितना 3 बॉल और फेस कर सकते हैं 35 के बाद जाना पड़ेगा तो आखिरी के 3 ओवर बाकी इस पारी के 17 ओवर के बाद 145 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और क्या ही बात करें हम साझेदारी की, 45 गेंदों में बनाए हैं 105 रन। तारीफ करनी पड़ेगी और जितनी भी तारीफ करें कम पड़ जाएंगी इन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए, मोहम्मद शरीफ और जयन। एक समय 150 का भी यहां आंकड़ा बहुत मुश्किल नजर आ रहा था गेम चेंजर्स के लिए, लेकिन अब
क्या शॉट लगाया है मोहम्मद शरीफ ने, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन गेंद और बल्ले का। गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या बढ़िया लेंथ पिक किया है यहाँ पर। बहुत ही मुश्किल शॉट था ये, लेकिन उस मुश्किल शॉट को भी बहुत ही आसानी से खेला। बढ़िया कमबैक यहाँ पर गेंदबाज द्वारा। बल्लेबाज के बल्ले से दूर फेंका गया ये गेंद, और रणनीति भी यही होनी चाहिए। एक और खराब गेंद और बहुत ही बढ़िया संपर्क, इस बार मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर से। एक और खराब गेंद और बहुत ही बढ़िया संपर्क। तो अब तक जयंत थे जो कि बाउंड्रीज और सिक्सर लगा रहे थे, और वहीं मोहम्मद शरीफ क्या बल्लेबाजी करते हुए। बेहतरीन, अगर जिसे कहते हैं पार्टनरशिप कैसे करनी चाहिए, ये दोनों ही बल्लेबाजों की पारी दिखा दीजिए आप। अब तक जयन अग्रसर थे इस पारी में, और मोहम्मद शरीफ बहुत बढ़िया उनका साथ निभाते हुए। ये हो सकता है तीसरा मैक्सिमम इस ओवर का। जी हां, हल्की सी धीमी गति की फेंकी गई ये गेंद, लेकिन बल्लेबाज के पाले में, और वो नहीं चुकने वाले। जिस लय में बल्लेबाजी हो रही है गेम चेंजर्स के बल्लेबाजों द्वारा, अविश्वसनीय पारी। मात्र 4 रन दूर अपने अर्धशतक से। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की गेंदबाजी करने की जरूरत है ब्लैक नाइट्स को, और रणनीति भी यही होनी चाहिए कि बल्लेबाज के बल्ले से दूर फेंकी जाए गेंद, तो उतनी बेहतर। ये बढ़िया गेंद, देख सकते हैं कि ऑफ साइड में जो है लंबी बाउंड्री है, चाहे वो स्वीपर हो या कवर का क्षेत्र हो। तो 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। एक और बड़े ओवर की समाप्ति। 18 ओवर का खेल हो चुका है, पूरा स्कोर है 164। 4 विकेट के नुकसान पर 164 फॉर 4। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी। तो आखिरी पिछले 4 ओवर में गेम चेंजर्स ने बनाए हैं 75 रन। ये एक और स्टैट्स आपको बताता है कि
किस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर। तेज गति की ये गेंद, फ्लैट डिलीवरी और बैकफुट पे जाके इसे खेल दिया है मात्र 1 रन के लिए। तो यहाँ थोड़ी समझबूझ से गेंदबाजी करने की जरूरत है यहाँ पर ब्लैक नाइट्स के गेंदबाजों द्वारा। तैयार नहीं थे यहाँ पर बल्लेबाज और डेड गेंद। जी हाँ, जैसे कि क्रिकेट में कहा जाता है, सिखाया जाता है गेंदबाजों को कि मैदान का जो डायमेंशन होता है उसके अनुसार गेंदबाजी की जाए। और डायमेंशन की अगर बात करें हम तो वी का जो क्षेत्र है बड़ा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि उस क्षेत्र में गेंदबाजी हो जहां पर बल्लेबाज को मजबूर करना होगा कि, कि कवर के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शॉट लगाए जाए। लेकिन इस बार बल्लेबाज का टॉप एज लगता हुआ फाइनल लेग के खिलाड़ी ने, माफ कीजिए थर्ड मैन के खिलाड़ी ने प्रयास जरूर किया था उस गेंद को रोकने का, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज। कहीं न कहीं गेंदबाज के गति ने भी साथ दिया बल्लेबाज का। 4 रन प्राप्त होते हुए 4 रन के साथ अब जयन पहुंच चुके हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर 90 पर। Came down the track, a full toss delivery, and it has gone out of here. A maximum 8th one for Jayan. He is on 96, one shot away from a milestone. A full toss delivery. 96 of just 34 balls. And there he is! A century for Jayan. Take a ball! A slot delivery for him, and he has gone over the long on fence for a mighty one. What an inning! What an inning! Century of just 100. Beg your pardon, of just 35 balls. 10 boundaries. 9 maximum. Strike rate of 291. Everyone are on their feet. And he will go back to the pavilion as a not out, retired not out. Top batting this from Jayan. Playing against a quality bowling and scoring a century of just 35 balls. It speaks about his quality. 18.4. 181 for 4. New batsman in his forum, and he was looking to play with a soft hand on the onside, give the strike back to Mohammad Sharif, who is at the non-striker's end. Couple of dot balls to finish off the over. 19 gone, 181 for 4. $181 for 4, and Jayan from Game Changers, the second batter to score a century in Tussle Premier League 2023.
Last over of the inning and game changers. They need 19 to reach to the 200 run mark. Full toss delivery to Sharif. And he has denied a single. And one can understand why he has done that. Way outside the tram-line of the arm stump. Talking about extra, only 6 extras have been conceded by the Black Knights bowler. Excellent from them. They are looking for 2. They are pushing for 2. They are sprinting for 2. 1 run taken. Sharif running at the danger zone. And he will have to go back to the pavilion. And that's come to an end of an excellent inning from Mohammad Sharif. 49 of just 31 balls. Sharif running at the danger zone, and he. This is good last over from Firoj. Anything well below 200 and Black Knights, they are confident of chasing down. They have some destructive batsmen in the batting lineup and this is gonna be a cracker of a contest. Full toss. Couldn't time it well. 1 run taken. They are running for 2. And this is suicidal. Danny, he wasn't even looking at the ball, trusting his call. Couldn't time it well. So Danny comes and Danny goes. 1 run taken. They are running for 2. $185 for 6. A dot ball. A dot ball in the last over of this inning is a gold dust. Only 4 single came in this over. Excellent from Firoz. Make it 5. And that's a wicket for him. Batsman playing across the line, paying the price. Goes back to pavilion without scoring. 4 single came in this over. Excellent from Firoz. Make it 5. And that's a And the last ball of the inning, Jayan walks back in. And it's the danger man is at the crease and the batsman, beg your pardon, bowler was looking to bowl outside the off stump, ended up bowling a wide ball. Came down the track. Has it gone the distance? Yet is that.
Flat. Maximum. Awesome. And is a volley. A white ball. So end of an inning and game changes after winning the toss. Have posted a big total 192 on the board. And Black Knights, their batters, have a job to do here. 193 to chase down. We will be back in shortly.
Hello, hello. All right then, to chase down 193. We have the two openers from Black Knights, Vishrant and Archit. And the bowler, it's Himanshu. It's gonna take some batting effort, some excellent batting effort from Black Knights to chase it down. Excellent delivery after pitching it up. Ball shipping away from the right-handers. Goes into the safe hands of the wicket keeper for no run. This is match number 19 of Tussle Premier League 23. This one came in, and batsman Vishrant just covering the line of the delivery and playing with no intention of runs. As we did mention about the pitch earlier, there is no grass at all. And somewhere around the good length, there is a spot. Ball grips a bit, stops a bit. So far, 4 balls have been bowled in the very first over of this inning. And Himanshu, he is yet to bowl a delivery where the score, a run can be scored. Half volley delivery, and this one driven through the cover to get one. And with that single, Vishrant is off the mark. So are the Black Knights. What a delivery, a peach of a delivery, squaring up the batsman completely. And luckily, he didn't nick it to the keeper. Excellent to finish off the first over. It's 1 for none. Earlier in this match, we're talking about the first inning where we got to see one of the best innings so far in this Tussle Premier League. A centurion, Jayan, from the Game Changers, scored a milestone under the pressure, that knock. And with that, with the help of that century, along with a crucial knock off for Mohammad Sharif, Game Changers, they have posted a mammoth total 192. In reply, 1 over gone, and the score is 1 for none. Sairaj bowling the second over of the inning. He doesn't have that much of pace to trouble the batsman, but the line and length is the key in his bowling. Doesn't bowl many freebies, doesn't let the batsman take him on or score runs off him. Plays it off the back foot, straight to the fielder at long off.
So dealing in singles at the moment with the batters from Black Knights. And they know once they are set, they have that ability to take on the bowler and score some quick runs. Banged in short, but as we mentioned about this wicket, this one stopping a bit, and batsman was way early in his shot. Ball came late onto him, and wicketkeeper does the rest. Outside edge, and it has been taken at point. Sairaj, he has drawn the first blood, and it's Vishrant who couldn't do much with bat today. Was promoted as an opener in this match. He will be disappointed. Goes back to the herd after scoring 2. And Black Knights 3 for 1. New batsman came in, is Shikhar. He will be the key here. He has to play an inning of his life to take his team through, to take his team home. He is the one batsman to watch out. Destructive. Right from the meat of the bat, and single taken. When you are facing your first delivery as a batsman and you got it from the meat of the bat, it shows how well you have been batting. 2 overs gone. It's 4 for 1, and of a successful over from Sairaj. And it's going to be a mini battle between a bowler and a batsman. A quality bowler up against a quality batsman. Himanshu, who bowled a brilliant first over. Taking his time, Shikhar at the moment. He knows once his eyes are in what he can do a lot of damage to the opponent. And game changers, they are aware of his capabilities. Lovely delivery. Attacking the stumps at the moment, and Shikhar is in no mood to take him on. Just respecting a good balls. That's what a good batsman does. Respect the good ones and punish the odd ones. This one shortening a length a bit. Batsman it got and with on offer, was looking to slash it through the point, but couldn't connect it.
spraying down the leg. Extension of an arm from the umpire. A single added to the tally. Takes to 5 for 1. Outside the tramland. 2 extras on the trot. Another brilliant delivery. He's getting some swing on offer. And single taken by Shikhar. Goes at the non-striker's end. Just checked his shot. And what a timing. Couldn't complete the flow of the bat, but enough power to take the ball through the line, through the boundary. Excellent from Archit. Just covering the line of the ball and holding the shape. Just check his shot. That's how the Pacers reply. When a batsman plays the short of their half volley deliveries, they come back with a shorter one, and that's what Himanshu did. Hitting the deck hard, giving no room to the batsman, and batsman just pushing it to the off, taking a single, retaining the strike. 3 overs gone, 12 for 1. चौथा ओवर इस पारी का साइराज अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर फेंकते हुए और पहली गेंद। इनकी गेंदबाजी में एक चीज देखने मिला है कि बहुत ज्यादा उछाल नहीं प्राप्त करती है इनकी गेंदें, तो बल्लेबाज के लिए बेहतर होगा कि इनकी गेंद को जितना बेंड होकर खेलें उतना बेहतर। और वैसे भी इस विकेट पर गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा उछाल प्राप्त नहीं किए हैं। कुछ गेंदें रहती हैं कि जो बिल्कुल भी उठती ही नहीं है, और इस बात का बखूबी ध्यान रखना होगा बल्लेबाजों को। हाफ वॉली की ये गेंद हवा में, कोई भी खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं, गेंद तेजी की तरफ से, तेजी से गेंद अब सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। अर्चित के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका, और फील्ड के अनुसार बल्लेबाजी कर रही है, ये बढ़िया बल्लेबाजी। जैसे ही देखा कोई भी खिलाड़ी वहां पर मिड विकेट और काउ कॉर्नर के रीजन में मौजूद नहीं, उस गैप को ढूंढा और बटोरा 4 रन। स्कूप कर दिया है इसे, और कोई भी मौका नहीं थर्डमैन की खिलाड़ी को उस गेंद को रोकने का। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर अर्चित द्वारा।
पिछली गेंद फुलर लेंथ की डिलीवरी थी तो वो जानते थे, अनुमान लगा लिया था कि अगली गेंद गेंदबाज हल्की सी शॉट करने ही वाला है और वही हुआ। जैसे ही ये गुड लेंथ की डिलीवरी देखी, बहुत पहले ही मन बना लिया था इसे स्कूप करने का, और बैक टू बैक बाउंड्रीज लगते हुए उनके बल्ले से कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत भी है। यहाँ पर ब्लैक नाइट्स को एक विशाल स्कोर का पीछा करने उतरे हैं। और इसे खेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में, मिसफील्ड की गई है और एक बार फिर सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई 4 रन के लिए बाउंड्रीज की हैट्रिक लगती हुई और दबाव में गेंदबाज पॉइंट के क्षेत्र में मिसफील्ड की गई है और अपना पहला ओवर बहुत ही बढ़िया ओवर था साईराज के द्वारा, मात्र 3 रन खर्च किए थे, 1 विकेट प्राप्त किए थे, लेकिन उनकी दूसरी ओवर में यहां पर अर्चित ने धावा बोला है और बहुत ही तेजी से रन बटोरते हुए अब तक 14 रन आ चुके हैं इस ओवर में। आखिरी गेंद एक बार फिर गेंद हवा में खेला है और गेंद कोई भी खिलाड़ी रोक नहीं पाएगा। काबिले तारीफ बल्लेबाजी यहां पर अर्चित द्वारा, फील्ड के अनुसार बल्लेबाजी हो रही है, जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं। जहां भी खिलाड़ी मौजूद नहीं उस क्षेत्र में अपना शॉट खेलते हुए, तो 4 लगातार बाउंड्रीज लगने के बाद अब ब्लैक नाइट्स का स्कोर हो चुका है 4 ओवर के बाद 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 30 फॉर 1 आफ्टर 4। और अब गेंदबाजी में बदलाव, डैनी आए हैं गेंदबाजी करने और पहली ही गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगते हुए पैड पे टकराई ये गेंद, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर शिखर द्वारा भी, अच्छी गेंद थी ये, उस गेंद का इंतजार किया, अंदर की तरफ आई और बल्ले का मुख खोलते हुए खेल दिया इसे पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन लेकर स्ट्राइक दे दिया है अर्चित को, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं 255 के स्ट्राइक रेट से अब तक। फुलर लेंथ की ये गेंद, गेंद हवा में खेली गई है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्ड किया गया और रोका गया बल्लेबाज को मात्र 1 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन गैप ढूंढने में नाकामयाब, सीधे खिलाड़ी के हाथ में। तो डैनी की गेंदबाजी की बात करें तो बहुत ज्यादा रूम नहीं देते हैं बल्लेबाज को, स्टंप्स टू स्टंप्स गेंदबाजी करते हैं और इनके पास बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रोक डिलीवरी है, जो कि कंसिस्टेंसी देखने मिल सकती है। वो है यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, जी हाँ, जिसकी ही हम जिक्र कर रहे थे। ये अपने मनचाहा यॉर्कर गेंदबाजी करते हैं, ब्लॉक होल में लगातार अंतराल 6 के 6 ब्लॉक होल में गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन इस बार दिशा ठीक नहीं और बढ़िया फ्लिक किया है यहां पर अर्चित ने, मिसफील्ड की गई वहां पर डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में और गेंद
बाउंड्री रेखा के बाहर 4 रन के लिए, जहां मात्र इस बार 1 या दिशा 2 रन ठीक नहीं। होने चाहिए थे, वहां पर मिल गए हैं 4 रन। 4 रन के बाद अब 5 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। स्कोर है 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो 5 ओवर का खेल के बाद अब छोर बदल लिए गए हैं। मोहम्मद शरीफ अब गेंदबाजी करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज एंड से। बहुत ही बढ़िया इनका दिन रहा, बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है यहाँ पर शरीफ ने। और अब मौका है इन्हें अपने गेंदबाजी से अपनी छाप छोड़ने की। मध्यम गति के गेंदबाज हैं और बहुत ही बढ़िया कटर्स जाने के लिए जाने जाते हैं मोहम्मद शरीफ। बहुत ही चतुर गेंदबाज हैं ये, बहुत ही चतुर क्रिकेटर हैं, काफी अनुभव इनके पास और दोनों ही क्वालिटी बल्लेबाज इनके सामने। बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर बल्लेबाजों द्वारा भी। ये अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई, हल्की सी उछाल भी थी इस गेंद पर, लेकिन लंबे काटी के बल्लेबाज हैं अर्चित। उस गेंद को वो मात्र कलाइयों के सहारे मोड़ा था 1 रन के लिए। इस बार हल्की सी गति में परिवर्तन किया था, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण वहां पर काउ कॉर्नर के खिलाड़ी द्वारा। मात्र 1 रन होने चाहिए थे, लेकिन गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अंत समय में थोड़ी हल्की सी बैड बाउंस देखने को मिली और उसके कारण 4 रन मिल गए हैं ब्लैक नाइट्स को और बल्लेबाज शिखर को। पहला बाउंड्री उनके बल्ले से लगता हुआ। गति परिवर्तन किया था, लेंथ बढ़िया था लेकिन लाइन बढ़िया नहीं, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और इसे जाने दिया बल्लेबाज शिखर ने विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर गति परिवर्तन की थी, ललचाने का प्रयास किया था यहां पर और उस प्रयास में कामयाब भी हो गए थे शरीफ। हल्की सी हवा में फेंकी गई ये गेंद और शिखर चाहते थे उस गेंद को फेंकना सीमा रेखा के बाहर, अंदरूनी किनारा बल्ले का, और भाग्यशाली रहे कि गेंद किलियों पे जाके नहीं टकराई। 1 रन मिल गए हैं। फुल टॉस की ये गेंद और बढ़िया क्षेत्र रक्षण। मात्र 1 रन मिले हैं। 1 रन के बाद स्कोर हो चुका है 46 रन।
तो एक रणनीति के तहत यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, कैलकुलेटिव बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। एक बार फिर बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल किया था, लेकिन सीधे वहां पर मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में, जो कि 30 गज के दायरे में। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई है। 6 ओवर का खेल हो चुका है पूरा, 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब आखिरी 14 ओवर में ब्लैक नाइट्स को बनाने होंगे 147 रन। So 6 overs gone, score is 46 for 1. 147 required of 84 balls. The required rate is 10.50 at the moment, which is pretty much gettable. If you have wickets in hand, and Black Knights, both the batters, they are stitching a good partnership. 43 of 25. Was looking to be a bit cheeky. A premeditated shot from the batsman. Misses it completely. The extra bounce on that delivery does the trick for him. Excellent delivery by Danny. He's bowling to his field here. Only 3 fielders are on the onside. Rest of them are at the offside. So the strategy, the plan is to let the batsman play through the cover, play through the long off or the point region. And the margin of error is so less for the bowler. Anything pitched on the middle or on the leg stump, we can see the ball traveling to the fence. Archit, he loves playing the shot on the onside. And this one came in. This is good captaincy from Game Changers and good bowling from Danny. Played it down the ground. Single taken. So the captain from the Game Changers, they would be happy, and they are happy. The bowler is happy if the batsmen are playing them to the offside. That's what they have set the field for. Full toss delivery. Bottom hand. Just a whip of the wrist. And it has gone over the ropes for a maximum. And with that maximum, it's 50 here for Black Knights. The first maximum coming from the blade of Shikhar, and it's a 50-run partnership as well. Partnership of 51 of just 30 balls. And at maximum, it will get the batsman going. Lovely, lovely delivery. Shortening his length a bit, changing the line of the delivery as well. And that delivery, it was so close to the body of the batsman to cut away. A dot ball to finish off the over. 7 overs gone. And Black Knights are 54 for 1.
Sharif will continue. A paddle scoop. And the ball is racing away to the fence. No fielder there. Third man gives it a chase. But the ball wins the race. The same kind of shot was tried by the batsman in the previous over. But in this over, he succeeded and gets a boundary. No fielder there. Third This is smart batting from Archit. And after that shot, we have a change in a field. So one fielder who was fielding at third man, he was sent. Now at the fine leg region. It was a half-tackle delivery. Batsman standing tall and whipping it on the onside. It will fetch him another boundary. Superb batting this from Archit. Playing with the bowler's mind, playing with the opponent captain's mind. Has it come off some part of the batsman? Nothing from the umpire. That means it has hit. Could be the thigh pad of the batsman. Wanted to have a single, to take a single. Denied by the non-striker. Full toss delivery is in the air. But he didn't carry to the fielder at long on. Danny was the fielder there. I beg your pardon, Arbaz is the fielder there, who came quickly to the ball, and a bullet throw from him at the non-striker's end. But both the batsmen are home safely. Way down the leg. Shikha playing with a calm headed at the moment. Lets it go. So the required rate is 10.5 and they have already got 10 in this over. One ball, beg your pardon, 2 balls to be bowled. Lovely ball. And equally well played. Just opening the face of the bat. They are sprinting for 2. Excellent running between the wicket. Good call from Shikha. As soon as he sees the fielder, he wasn't quick at the ball. Takes a couple of runs. Outer edge of the bat, and it will go to the fence. Sairaj was there, who was fielding at the third man, and it goes right off him. It will not please the bowler at all. It could have been stopped. It should have been stopped. But nevertheless, it's a boundary for Black Knights. It's a boundary for Shikha. 8 overs gone. 70 for 1. This is brilliant to watch from Black Knights. The way they have, especially these two batters, the way they have paced their innings. Archit and Shikha. They have taken their time initially,
But now both the batsmen are well set and they need to play some more overs together. Change in bowling. Left-hander has been brought into the attack. Sanjay is the bowler. And what a shot from Archit! Take that! Extension of an arm. And ball goes sailing over the long off fence for a maximum. The first one for him. What a shot from Archie. Boy, this batsman is such a treat to watch. He had played some eye-catching strokes. From Archie. Take that. Lovely opportunity, and it has been taken. For once it looked like the ball would go over the filter, but eventually he did well to get underneath it and takes a very important catch. This is a big wicket. Archit, he batted so brilliantly for 46 of just 23. Beg your pardon, it's 24 balls. And game changers, they are pumped up. They know the value of that wicket. Lovely opportunity, and it has been taken. So Archit goes to the pavilion. So one danger man goes in, another danger man comes out. Sandy is the batsman. Who is known for his big hits. And it's important for him and Black Knights. Off the back foot, was looking to slash it off the offside. No connection. Dot balls. Talking about the Black Knights, they do have some power hitters yet to come. Full length delivery around the pads. And a flick of the wrist. Goes on the onside, single taken. Gets off the mark. 9 overs gone. Score is 76. 77 it is. हिमांशु को एक बार फिर गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है
अपना तीसरा ओवर गेंदबाजी करते हुए हिमांशु अब तक मात्र 9 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया लय में गेंदबाजी किया है। तेज गति ये गेंद पैरों पे टकराई और विकेट कीपर के पास कोई मौका नहीं उस गेंद को रोकने का। लेग बाय के रूप में मिलेंगे 4 रन। तो रन जैसे भी आए, रन आने चाहिए, रन बनने चाहिए। ब्लैक नाइट्स के लिए ये ज्यादा जरूरी है। गेंद पैरों पे टकराई और और बढ़िया विकेट बल्लेबाजी कीपर ये के पास कोई मौका नहीं। अब तक ब्लैक नाइट्स के द्वारा बढ़िया जवाब देते हुए। इस बार स्टंप्स को अटैक करते हुए और सैंडी उस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला। ऑन साइड में गेंद गई गेम चेंजर्स के कप्तान के हाथ में। शरीफ वहां पर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। पटकी हुई ये गेंद, गति भी उछाल भी और दोनों से ही मात खाते हुए बल्लेबाज। बांध कर रखा है अब तक सैंडी को। गेम चेंजर्स के गेंदबाजों ने मौका नहीं दिया है हाथ खोलने का। प्रहार कर दिया और गैप गई है, गैप गेंद गई है गैप में। लॉन्ग ऑफ के और कवर के खिलाड़ी गेंद का पीछा जरूर किया था लेकिन मौका नहीं उन्हें उस गेंद को रोकने का। बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था ये शॉट सैंडी के लिए। और कहीं ना कहीं ये 4 रन के बाद उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन प्ले एंड मिस। बढ़िया जवाबी गेंदबाज यहां पर हिमांशु द्वारा। उस बाउंड्री के बाद अतिरिक्त गति से फेंकी गई ये गेंद और कोई भी संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। 10 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। स्कोर बने हैं 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर और अब समय हो चुका है एनर्जॉल ड्रिंक्स ब्रेक का।
और अब गेंदबाजी में बदलाव, स्पिनर आए हैं गेंदबाजी करने। फोरम है गेंदबाज और पहली गेंद फुल टॉस की है, गेंद पैरों की तरफ और इसे कलाइयों के सहारे बॉटम हैंड का बेहतरीन इस्तेमाल, 4 रन बटोर लिया है और अपने स्वागत किया है यहां पर फोरम का यहाँ बल्लेबाज शिखर ने। तो 10 ओवर में चाहिए थे 108 रन उस बाउंड्री के बाद। अब इक्वेशन हो चुका है 104 रन का 59 गेंदों में। और पहली गेंद फुल टॉस की गई। बैकफुट पे जाके इसे कट किया, बहुत ही बढ़िया शॉट सिलेक्शन, बढ़िया अनुमान लगाया था यहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद को गैप में फेंकने में नाकामयाब। एक बार फिर बैकफुट पे जाके इसे पंच कर दिया है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी काफी वाइडिश, डैनी है वहां पर और क्या थ्रो किया है, बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी हैं ये। फ्लाइटेड गेंद, इसे खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, कोई रन लेने का मौका नहीं मिलेगा। काफी तेजी से वो गेंद ट्रेवल कर रही थी। बढ़िया गेंद और उसे फॉरवर्ड डिफेंस के स्टाइल में खेला था, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है। ओवर थ्रो हो चुका है लेकिन वहां पर अरबाज तेजी से गेंद पे झपटे और बल्लेबाजों ने सही समझा कि रिस्क ना लिया जाए। दोनों ही क्रीज पे सुरक्षित, हालांकि 1 रन जरूर जुड़ जाएंगे टीम के खाते में। स्कोर हो चुका है 91 रन। अब तक बढ़िया ओवर घटा है फोरम द्वारा, मात्र 6 रन इस ओवर से। और इसे खेल दिया है सीधे, डैनी वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं की। बढ़िया कैच अंडर द प्रेशर और एक बड़ा झटका लगता हुआ ब्लैक नाइट्स की तरफ से शिखर और इसे खेल दिया है लौटते हुए पवेलियन वापस। वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। अगर कोई एक बल्लेबाज था जो ब्लैक नाइट्स के लिए काम कर सकता था वो थे शिखर, और उनके जाने के बाद अब दबाव बढ़ता हुआ ब्लैक नाइट्स के ऊपर। जब तक वो क्रीज पर थे काफी उम्मीदें उनसे, निराश होंगे अपने आप से। संपर्क बिल्कुल भी ठीक नहीं, हालांकि गेंद जरूर उनके पाले में, लेकिन दिन आज उनका नहीं। 11 ओवर का खेल पूरा, 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर और एक सफल ओवर की समाप्ति फोरम द्वारा। रिस्टी लेग आर्म स्पिनर आए हैं गेंदबाजी करने। अमय अब देखना होगा, दोनों ही बल्लेबाज जो कि क्रीज पर नए हैं, हालांकि संदीप कुछ समय से बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं। बल्लेबाजी करने आए हैं प्रवीण सनील, जो कि बहुत ही मजे हुए बल्लेबाज हैं ये।
अंदर की तरफ आती हुई गेंद, लेकिन उस गेंद में उछाल भी और बल्ले का अंदरूनी किनारा भी लगा था। हमें जो कि बहुत ही बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लेग स्पिनर हो या गुगली हो। ये बढ़िया बल्लेबाजी प्रवीण द्वारा अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पटकी हुई गेंद थी, इसे सफल होके ऑफ स्टंप पर आए और इसे खेल दिया छोटी बाउंड्री की तरफ स्क्वायर लेग के रीजन में 4 रन के लिए, और इस 4 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए प्रवीण सनील। बढ़िया कमबैक, बहुत ही बढ़िया ये गेंद थी। लुभाया था, ललचाया था बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज प्रवीण वो नहीं फंसने वाले इस झांसे में, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। फ्लाइटेड डिलीवरी, इसे खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, हल्की सी मिसफील्ड और बल्लेबाज के पास काफी समय एक रन लेने का। फ्लाइटेड गेंद, गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी डैनी से कुछ फुट, कुछ यार्ड, कुछ इंचेस दूर गेंद गिरती हुई। पिछले 2 ओवर से थोड़े बिजी से रहे हैं डैनी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, अपने राइट अपने लेफ्ट दोनों तरफ दौड़ लगाते हुए, गेंद को रोकते हुए, एक इंपॉर्टेंट कैच पकड़ते हुए। 12 ओवर का खेल हो चुका है पूरा, स्कोर है 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 98 फॉर 3, और अब रिक्वायर्ड रेट 12 प्रति ओवर। फुल टॉस की ये गेंद, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं, बॉटम एंड ऑफ द बैट। अब ऑन साइड में अगर फील्ड जमावट की बात कर लें तो एक वाइडिश लॉन्ग ऑन देखने मिल सकते हैं। डैनी काउ कॉर्नर पर है अरबाज, एक मिड विकेट के खिलाड़ी, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी 30 गज के दायरे में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल भी गति नहीं दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं बल्लेबाज को कि आइए कदमों का इस्तेमाल कीजिए। और इस बार लेंथ में परिवर्तन किया था और ये गेंद अंदर की तरफ लाते हुए, तो बढ़िया वेरिएशन यहां पर दिखा रहे हैं, अपने स्किल्स की प्रदर्शन करते हुए यहां पर फोरम। बढ़िया कॉल यहां पर बल्लेबाज द्वारा, अगर रन लेते तो जोखिम में हो सकते थे। 100 रन पूरे हो चुके हैं ब्लैक नाइट्स के, और अभी भी 93 रन चाहिए 44 गेंदों में। बढ़िया संपर्क, और इस बार कोई भी खिलाड़ी उस गेंद को रोकने में कामयाब नहीं होगा। जी हाँ, काफी समय से प्रयास कर रहे थे सैंडी, और आखिरकार जैसे ही गेंद और बल्ले का तालमेल हुआ, संपर्क हुआ, 6 रन छपा हुआ था। पहला मैक्सिमम संदीप के बल्ले से, और इस मैक्सिमम के बाद कोई अनुमान लगा सकता है क्या ये उनका दिन है? क्या यहां से वो इस पारी को एक यादगार पारी में तब्दील कर पाएंगे? तो ये तो देखने वाली बात है। सफल क्रॉस,
और इसे खेल दिया ऑन साइड में, मिसफील्ड हुई है वहां पर अरबाज द्वारा, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, लेकिन कुछ इंच पहले ही गेंद को रोका और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। सैंडी और प्रवीण के बीच 2 रन दौड़कर पूरा किया। 2 रन के बाद अब स्कोर हो चुका है 108 रन। 13 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। Amir will continue and Praveen will continue scoring runs against him. This is what experience brings to the table. This is what an experienced batsman can do. Boundary. It was a boundary. Amir will continue and Praveen will continue scoring runs. This one off the back foot. Sensible from Praveen. "12 runs in an over is what Black Knights need from here on." Lovely delivery, angling in. Loud shout. Black Knights need from here on. And the batsman survives. Not out, says the umpire. What a ball! This time batsman played on. He was in two minds to play that shot. Initially he was looking to go downtown. And then he was looking to just guide it between the third man and point, ending up chopping on to the stumps. And Sandeep, just when he started to score some big runs, some quick runs, he departs. What a ball! 113 for 4. This time batsman. Black Knights, they bat really deep. It's the batsman Akash who is making his way to the crease. Still, the batsman likes of Sagar is yet to come to bat, and one can remember what he did in his previous contest. A big blow for Black Knights. Now the owners on these two batters, Akash, he will have to be at the crease with his partner Praveen. And a very first delivery, he went for a glory shot, he went for a fancy drive, misses it completely. Not only the batsman, even the wicket keeper was beaten by it. A boundary came in form of bye. Well, Black Knights will take it. Floated delivery. Batsman goes on the onside. Single taken. He is off the mark. 14 overs gone. 118 for 4. Last 6 overs. And Black Knights need 75. He went for a glory. — 75 of 36. 35 of 36.
Now the responsibility on the big shoulder of Praveen Sanil here. Sairaj has been brought into the attack, and of the very first ball, Akash was looking to take him on. Shuffling across and somewhere trying to unsettle the bowler. Sairaj bowled a brilliant delivery. Batsman could only score single. Half volley, pushed it to the point, single taken, overthrow. And they are happy with one. And with the required rate is climbing up. Batsmen have to find a way to score a boundary runs. Akash goes for a big drive. A big heave inside edge of the pad. Square leg fielder was there. Single taken. 3 balls, 3 singles. This is good over so far from Sairaj. Outside the off stump. And just a deft touch. Deft touch, and this lightning quick outfield does the rest. Smart batting this Bryce Praveen. Outside the Room on off offer. stump. And he just steering it between third man and point for 4. Once again around the off stump. Batsman leaning forward. Just a push through the cover and gets a single. 8 runs have come in this over. Last ball. Akash goes over the bowler's head. But the timing wasn't good. Sharif was there at long off, does the rest. 9 came in that over. 15 overs gone. 127 for 4. Fifteen overs gone. 127 for 4. Hundred and 27 for 4. Last 5 overs and Black Knights, they need 66. 66 of 30 balls, and still the batsman likes of Shehbaz and Sagar is yet to bat. And it's good to see Shehbaz, who is just at the boundary, all set. Earlier, he got injured on his own bowling. Right then, Amay is the bowler, and a very first delivery, Akash. He plays across the line, goes for a big heave, no connection, struck on the pad. Umpire has his finger up in a flash.
So half a side are back to the herd for Black Knights. Amir is the bowler. And it's Shehbaz walking in to bat. And he is looking fit. And hopefully he can play an inning of his life to take his team home. He has come out to bat with a great hope. Amay is bowling from Chhatrapati Shivaji Maharaj, and the boundaries are short, and what a connection! What a way to announce the arrival! It's not over until Shehbaz is there at the crease. The very first ball, a full toss delivery. And he has hammered it over the mid-wicket fence for a maximum. What a way to announce the arrival. We did mention earlier, Black Knights, they are a powerhouse. Chasing down a mammoth total of 193. This game is certainly on. The margin of error for spinner is very less when you're bowling from Chhatrapati Shivaji Maharaj, and the boundary are shorter. Where is his length? Struck on the pad. And this would have gone down the leg side. This is good reply from Ame. Shortening his length, bowling a quicker one. Off the back foot. And he is running well. This is good sign for Black Knights. Arbaz, I beg your pardon, Shehbaz, who is looking fit. And he is pumped up alongside his partner Praveen Sanil. Came down the track. Goes up and over. One bounce into the fence. Excellent looking shot. Praveen Sanil. He brings elegance in his batting. Converting a half volley into a full toss and just holding the shape. Going over the cover. Targeting the shorter boundary. That's what a smart batsman does. Once again came down the track, driven down the track. But the timing wasn't so good. Gets a single. The over that belongs to Black Knights. 16 overs gone, 139 for 5. 54 required of 24 now. And after that single, Shehbaz, he is looking in a bit trouble here. He's limping. Just when everybody was happy to see him running well, running hard. So this is good spirit of cricket shown by the game changers and the captain, allowing the runner for Shehbaz. Excellent, excellent to see from the captain of game changers, Sharif. 54 required of 24 balls. Anybody's game. Danny into the attack. And Danny gets a wicket.
Once again, Praveen was looking to go inside out, but this time couldn't clear the fence. Finds the fielder in the deep. Danny He was doing looking attack. so good. And Played Danny, a good hand. 22 of just 13 balls. But he would have liked to be at the crease for some more time, some more overs. Shubham is the new batsman. And a very good looking shot to get off the mark. And that's a boundary, a misfield in the deep. This will not please the bowler. This will not please the captain. It was the same fielder who takes a good catch, and another one, the very next delivery comes to him and he lets it go through the fence for 4. Boundary to get off the mark, 143 for 6. Full toss delivery. And it is going into the fence. No fielder at the square leg region. 3 for 6. Shubham, Full toss delivery. he just comes out to the bat And it is going into the fence. No fielder. and already scored 8 of 2 balls he has faced so far. Lovely delivery by Danny, and this one gripping a beat, stopping a beat to the batsman, and equally well played by Shubham. Sometimes we have seen the batsman after scoring 2 back-to-back boundaries, they want to make a hat-trick of the boundaries and ending up throwing their wicket, but it's not the case with Shubham. He is sensible. Required rate is 13.50 at the moment, and they have scored 9 runs in that over, 2 balls to be bowled. And Danny right on the money into the block hole. Well, he was aiming to bowl into the block hole, ended up bowling a low full toss delivery. And batsman gets a single of it. 10 runs have been scored in this over. Last ball of the over. Banged in shot, and this one didn't rise at all. That caught the batsman by surprise. Dot ball to finish off the over. Every dot ball from here on is a gold. 17 overs gone. 149 for 6. 44 required of 18 balls. "44 of 18 balls. This match, this game is shaping up to be a thriller of a contest now. From the Black Knights' perspective, the spectators, they are confident of chasing this down. 14.67 is the required rate. They need a big over, one big over. Various game changers. They need a tight over. One over of with a wicket in that over will make the things easier for them. Shubham to bowl his last over of the spell, and he gets a timber.
You miss, I hit, and Shahbaz. His stay at the crease lasted only for 5 balls. The way he started off was something to watch, but he would be disappointed. And the new batsman walking in is the Sagar. Another power hitter from Black Knights. He played like a true champion in his last outing, and he needs to play the same kind of inning. This guy can hit big. This guy can bat. He is more than the batsman of number 8. कौन? He had a great day with the ball in his hand. Shubham. Beg your pardon. Sagar. And he is off the mark with a single. Played off the back foot through the cover. Himanshu Verma. What a bowler he is. When every bowlers have leaked runs, they have been taken to the cleaners. He is the one who have banged in a shot. So we were just talking about Himanshu. Be it with the new ball in his hand or be it the old ball in his hand, he is almost ready to deliver. Pacey delivery, played it off the back foot. Fielder at long on, does the race, single taken. Game changers, they are happy to concede a single. Black Knights, they need a big one. And is it the one? Yes, it is. A slot delivery to the right-hander. An excellent connection between bat and ball. Goes sailing over the ropes. And is it the one? Yes, it is. A much needed maximum for Black Knights. 35 off 13 now. Lovely batting. Excellent from Shubham. He knew that the bowler will. He will banging shot after bowling a half delivery, the previous one. Just waits for it, guiding it, using the pace of the ball to take the ball into the fence for 4. 18 gone, 162 for 7, 31 required of 12 balls. Shubham and Sagar, they have to ensure, they have to make sure that they don't lose a wicket from here on. They have to take this on their shoulder to take their team home. Various game changers, they would be hoping to get at least a wicket, at least send one of these batsmen to the hut. (31 of 12 balls). If this match was played 10 years back, this would have been impossible target. But nowadays, this modern cricket, this modern batsmen, they are so confident of chasing down anything 15 or 16 in and over.
Sairaj to bowl the most crucial over of the match. And he gets the big man. Sagar. Over of the match. It's not a day for him with the bat today. Probably the lack of the bounce. And he gets a big man. Excellent, excellent bowling from Sairaj. He knows the nature of this wicket. He knows it well. Just hitting, just doing the basics right. Attacking the stumps. And you miss. I hate. 8th wicket down. And to bat, batsman walking in is Harpreet Bright. Shorter length of a delivery. Bright stands tall. Pulls it on the onside. Gets a single. Gets off the mark. Shubham is still there at the crease. Unbelievable. There is nothing a batsman can do about it. All one can say that he was lucky that it didn't cast around to the stumps. In his slot, and the fielder in the deep, he went for a catch. They have taken run. And they have completed 2 as well. They have taken Good effort from the fielder in the deep. They knew that the importance of this wicket. Some noise for sure. Yes, it is confirmed by the umpire. He has nicked it to the keeper. Sairaj getting the 2nd wicket in this over. So sending both the batsmen, Sagar and Shubham, in the very same over. Sairaj Yes, it is confirmed. bowling an excellent over under the pressure. He was late on his shot. Dot ball to finish off the over. Excellent, excellent over by Sairaj. Conceding only 3 runs, getting 2 wickets. End of a brilliant spell by Sairaj. 4 overs, 33 for 3. 19 gone. Is 165 for 9. Black Knights, they need a miracle of an inning here. 5 maximum for them. 6 balls, 28 required.
They need a Rinku Singh here. It was hit well, but finds the fielder. Came down the track, but the timing wasn't good. And they don't want to take a single. 2 dot balls. 28 of 4 balls. Into the block hole. Played it back to the bowler. No run. Lovely delivery. Full length delivery. Once again, cramping the batsman for room. Now this match is of mere formality. 28 of 2. One would say Black Knights, they were in the game till the very end, till the 19th over. Good sound of the bat, and the ball is racing away to the fence. It was hit hard. Even the quick legs of the fielder at long leg couldn't cut it off. Boundary coming from the blade of Harpreet Bright. 169. Last ball of the match. And they get a single. And it's a victory for Game Changers. Brilliant display of bowling from their bowlers. Defending a total of 193 against a good team likes of Black Knights. They won it by 22 runs.
All right, then. I have the man of the moment with me, Jayan. Excellent day with the batting. Just when your team was under the pressure, what was going through your mind? So this is my second match that I'm playing here. So one thing that I have learned is it's all about that 8 over to 15 over game. So I just wanted to be there till that time because I knew that once that that bowler the new ball gets off and the wicket becomes a little more open up, and that's when you can start scoring. So I just wanted to spend some time in the crease. So that's all I did. And once you start middling, then you see the ball like a football. So I started scoring. Yeah. Tell us, were you counting your maximums? Do you know how many sixes that you have hit today? Seriously speaking, no, I didn't see at the scoreboard. Even my team told me I need some, 10 runs of 2 balls to score that 100. It was not going in my mind at all. If I started playing that kind of a game, then it would have been a different game. But seriously, I don't know. I haven't seen the scorecard yet, being honest. Uh, did your captain has some message for you, or any special role has been given to you? So, one thing about my captain, Sharifa, is that he lets you do whatever you think is right at your own strength. He doesn't pressurize at all. The previous match that I played here, I couldn't score runs, but he never demotivated me. He showed faith in me. He took me in the playing 11 and gave me a position that I wish to come into bat. So that's the only thing. And he was in the middle with me when I was, scoring those runs. And he kept me a little, he didn't let me go haywire, saying that don't score off every ball. Take singles once you score that maximum. So really that helped me and I could score runs. Was it your first century? This is my first century after my school years. After say probably what 25, 20 years, 34 I am. So in school time I had scored century, and this is the next time. Yeah, my wife and my family will really be happy. Definitely, and why not? It was an exceptional knock from you. Please continue having a great run in TPL. Enjoy your day. So that's all, ladies and gentlemen, from the post-match presentation. It was the first game played today. We will be live with the second one, which is about to commence in shortly.
All right, then, welcome to the live coverage of match number 2 of day 19 at Mauka 365 Tussle Premier League 2023. Now, this is the clash of the table toppers, the top 2 teams of TPL so far. Saturn Warriors, who have been undefeated, taking up against Invaders. So both the teams have played 5 matches each. Saturn Warriors, as I mentioned, they have been undefeated. Whereas Invaders, out of their 5 matches, they have won 3. And they are at number 2 in the points table. And it's a tussle. A real tussle between 2 good teams is about to begin. 2 openers out in the middle. Raj. Prashant is at the non-striker's end. And the bowler is Azim. And it starts off bowling a good leg delivery, which rises up a beat. Batsman watching it cautiously, playing it defensively for no run. Could have been a wicket. Raj advancing down the track, was looking to take the bowler on straight away. It has hit high on the bat, and the bowler in his own follow through. It juggles once, twice, and eventually slips out of his hand, and it's a life given to the batsman. Good. Good bowling, good delivery. A fuller length delivery that came in to the right-hander, and batsman Raj discovering the line of the ball. A forward defense from him, getting it right from the meat of the bat. That's the only good thing for the batsman there. Shortening his length a bit. Well, it wasn't done intentionally, but the length that he was aiming to hit, it was a good length. But nevertheless, only a single could be scored off that delivery. Single taken by Raj. He is off the mark. And so are the Saturn Warriors. And the kind of action Azim has, bringing the ball into the right-hander, comes naturally to him. So with this kind of action, if he can take the ball away from the right-hander, can make him more lethal. Once again came into the batsman, and Prashant, who is standing tall, blocking the ball for no run. A good start this from Invaders.
Azim conceding only a single. And certain warriors, both the batsmen, they want to just play the initial overs through. Don't want to take risks. Don't want to go for a fancy tries or a glory shots. Just want to take their time to set in. And they know they bat deep. They know they have some brilliant batters down the order. And it's Saga here to bowl the second over, and he starts off bowling a full toss delivery. Batsman driven it through the cover only to get a single. Sagar Kunwar from Invaders. What do we have to say about this guy? He has always taken a wicket with the new ball for his team. He isn't bowling with the pace that he is known for, but the very first over for him, and as soon as the match progresses, as soon as he bowls more deliveries, you will see him generating some extra pace, and that's the delivery. A loud shout of appeal. It has come off the pad, says the umpire. And Invaders, the bowler, they are in disbelief. Nevertheless, it's a boundary. It's a boundary for certain warriors. What an excellent delivery that was. It came in sharply to the right-hander and it didn't bounce at all. Prashant, who is a tall guy, he couldn't bend down at time. It was a close call, that's for sure. Came down the track. What a connection! He loves challenges, Prashant. Taking on a quality bowler, Sagar. Man, that went to the fence like a tracer bullet. That's how the Ravi Shastri would say. And that shot that will not please any bowler. Watch out for the reply. And that's how Sagar responded. We told you. No medium pacer or pace bowler likes the batsman advancing. Full toss delivery. It went so quickly to the long on. And batsmen, they don't want a crossover for one. There wasn't a single. There wasn't a run. 2 overs gone. It's 10 for none. Mauka 365. Tussle Premier League 2023. Sponsored by TMS Holidays. Thanks to all the sponsors for making this event a massive one, a successful, a mega event. Thanks to all the 10 teams participating. And our broadcasters, our statisticians, the match officials.
Everyone. It goes up and it goes over the fielder. It didn't come from the meat of the bat, but the enough power to take the ball to the fence. Everyone. It goes up, then it goes Playing it over on the up. fielder. Batsman Raj. And he gets his first boundary of the inning. What a shot! Premeditated, you can say, but the batsman, the way he played that shot, one can say it was a shot of authority. What a shot! Charging down the track, converting a good leg delivery into a half volley and playing it in the safest region of the ground over the bowler's hand for a maximum. What a shot that was. And just after playing that shot, batsman, he has a change of a bat. Not every time you're going to see that batsman changing a bat after scoring a maximum. But Raj decided to do so. It wasn't timed well. And it's a sloppy bit of a work done by the fielder in the deep. Both the batsmen had no intention of taking even a single, but they got a boundary. Timed well. Raj, after scoring 10 off 2, putting the pressure on the bowler Azim here. How is he gonna respond to him? What's the next delivery he's coming up with? Is he gonna go into the block hole? Is it gonna be a change of a pace? Well, he banged in shot and ball lobs up in the air and taken in the deep. So Azim having a last laugh, and batsman Raj, after scoring 10 of 2, one would question, was that needed? Well, that's the kind of nature Raj has. He loves playing shots, but it was one too many for him. He goes back to the hut after scoring a 16 of just 9 balls. "24 for 1, 2.4 overs." New batsman came out to bat at number 3 is Ajinkya. 24 for 1. Plays it defensively, was looking to take a single, denied by his partner. So this has been an event full over so far. Some good shots from the batsman Raj, and the bowler getting his revenge.
The appeal for an LBW. Says no the umpire. And of a successful over. 3 overs gone. It's 24 for 1. Appeal for an LBW. Sagar will continue. He is ready to bowl the 4th over of the inning, the second one for him. Good delivery. Once again bringing in to the right-hander. In the previous over, Prashant, he played some attacking shots against Sagar. And he continues to do so. This time, he goes through the point. No fielder in the deep to stop that. And he continues to do so. This time not only he came down the track but also backing away, making some room for himself to find the gap there. Excellent batting by Prashant. Once again, and one can see the move of Sabu here. He wants to get closer to the wicket. And it's not the bowler who wants it, it's the Sabu himself. And it's a good thinking from him. After the previous couple of deliveries where the batsman Prashant came down the track, and since the wicketkeeper is up, what would be the length from the bowler? Lovely delivery. And this is what happens when you have the wicketkeeper up. The batsman, he doesn't want to leave his crease, playing the shot from the crease, waiting for it. And playing it with a soft hand, opening the face of the bat to the point to take a single. It was down the leg, but excellent glove work done by Sabu. He didn't have much time to react to it, but moving across to his left. Nicely bowled and played well as well. So seeing the wicketkeeper up, there is a change in tactics from the batsman, change in strategy from Prashant. Now he doesn't want to play big shot. So end of over 4, 7 came in that over. 31 for 1. Hello.
तो जिस प्रकार की बल्लेबाजी प्रशांत कर रहे थे, वो दबाव डालना चाहते थे गेंदबाज के ऊपर। और कई बार हमने देखा है जब बतौर बल्लेबाज आप बल्लेबाजी करने आते हैं और आपका एक दो निर्णय होता है, या तो आप अपने विरोधी के टीम से सबसे अच्छे गेंदबाज के ओवर को सुरक्षित खेल लीजिए, या तो उसी गेंदबाज को प्रहार कीजिए ताकि अन्य गेंदबाज पर भी दबाव डाल सके। कहीं ना कहीं अगर इस बात से मुझे याद आता है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 2011 का विश्व कप का मुकाबला, वो जहां पर उमर गुल बहुत ही बढ़िया लय में गेंदबाजी कर रहे थे उस पूरे ही टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप के। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने धाबा बोला था, दबाव डाला था उनके ऊपर, और नतीजा ये हुआ कि उनका दिन चला ही नहीं और उनके अन्य गेंदबाज भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन क्या शॉट लगाया है प्रशांत ने! जैसे ही देखा विकेट कीपर पीछे है, उन्हें मौका मिला, क्रीज छोड़कर बाहर आए और जगह बनाई अपने लिए। और जब भी गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच टकराती है, नतीजा यही होता है जो इस गेंद का हुआ है। आसमान में कहीं छुप सी गई है ये गेंद। चला ही नहीं और उनके अन्य गेंदबाज भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन क्या शॉट लगाया है प्रशांत ने। मौका 365 टसल प्रीमियर लीग का 19वां दिन, माफ कीजिए 19वां मुकाबला ये, और आज के दिन का दूसरा मैच ये खेला जा रहा इन्वेडर्स और सैटर्न वॉरियर्स के बीच। आज के दिन का पहला मुकाबला जो कि आखिरी ओवर तक चला, बड़ा मुकाबला था वो। दोनों ही बेहतरीन टीम थी आमने सामने, ब्लैक नाइट्स और गेम चेंजर्स, जहां पर गेम चेंजर्स ने उस मुकाबले को जीता था आखिरी ओवर में। और उस पारी में, उस मैच में हमने देखा था कि आज एक और सेंचुरियन हमें मिले टीपीएल में जयन के रूप में। फुल टॉस की ये गेंद, शॉट को मात्र चेक किया था और ये मौका था बदला लेने का, और कैच लगभग लगभग हो गया था। बिल्कुल भी मुश्किल कार्य नहीं था ये, शॉट को मात्र चेक किया था। लेकिन अंत समय में क्या हुआ कि गेंद उनके हाथों से फिसली, ये तो सिर्फ आपको वो खिलाड़ी ही बता सकता है। जीवन दान मिला है यहाँ पर प्रशांत को। उस जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते हैं वो, ये देखने वाली बात होगी। प्रशांत को उस जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते हैं वो। सैटर्न वॉरियर्स जैसे टीम के बल्लेबाजों को मौका देना, ये सही चॉइस नहीं है। एक बार फिर ऑन द ऑफ खेला है, गैप ढूंढने में कामयाब, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से 4 रन। एक बार फिर ऑन द ऑफ खेला है, गैप ढूंढने में कामयाब, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से 4 रन।
क्ले एनामिस एक बार फिर ऑन द राइज, इसे खेलना चाहते थे कवर के क्षेत्र में, लेकिन गेंद ने हल्की सी घुमाव ली टप्पा गिरने के बाद, और विकेट कीपर साबू ने उस गेंद को अपने दस्तानों में सुरक्षित पकड़ा। डॉट गेंद के साथ 5 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। स्कोर है 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी में बदलाव, और एंड में भी बदलाव है। पंकज मिश्रा आए हैं, एक अनुभवी गेंदबाज, गेंदबाजी करने मीडिया एंड से। बहुत ही सटीक और लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं पंकज मिश्रा, किफायती गेंदबाज। और देखना होगा सेटन वॉरियर्स के दोनों ही बल्लेबाज इनके गेंदबाजी का किस प्रकार सामना करते हैं। और पहली गेंद लो रहती हुई, लेकिन बढ़िया तरीके से खेला उसे बल्लेबाज प्रशांत ने, अंत समय तक नजरें बनाए रखी गेंद पर, और कलाइयों का इस्तेमाल करके इसे खेल दिया ऑन साइड में। खिलाड़ी वहां पर डीप में तैनात, 1 रन लेने का आसान सा मौका। एक और अच्छी गेंद, और अजिंक्य इस बार इसे सॉफ्ट हैंड से खेल के छोर बदलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे गेंदबाज के हाथ में। बढ़िया शॉट, कवर के खिलाड़ी के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने प्रयास जरूर किया उस गेंद को रोकने का, लेकिन कोई मौका ही नहीं उस गेंद तक पहुंचने का। जैसे ही रूम मिला बल्लेबाज को, एक्सटेंशन आर्म देखने मिला यहां पर, और क्योंकि कोई भी खिलाड़ी वहां पर स्वीपर कवर में तैनात नहीं, और आजकल के बल्लेबाज जो हैं, मॉडर्न क्रिकेट के बल्लेबाज जो है, एक समय था इनसाइड आउट शॉट खेलना बहुत ही मुश्किल कार्य था, लेकिन उसी मुश्किल शॉट को अब फेवरेट शॉट बन चुका है बहुत सारे बल्लेबाजों का। ये बढ़िया कमबैक डिलीवरी पंकज मिश्रा द्वारा, लेंथ और लाइन दोनों में ही परिवर्तन देखने मिला। थोड़ा लेंथ को शॉर्ट रखा, और गेंद की घुमाव भी टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ। पटकी हुई गेंद, छोटी बाउंड्री है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और 4 रन और मिल जाएंगे। इस प्रकार की गेंद से आप बिल्कुल भी बल्लेबाज को परेशान नहीं कर पाएंगे। जैसे ही बल्लेबाज को मौका मिला बाउंड्री बनाने का, बाउंड्री रन बटोरने का, उस मौके को चौके में तब्दील किया है यहां पर अजिंक्य ने। दूसरी बाउंड्री लगती हुई इस ओवर की। ये बढ़िया गेंद, और बढ़िया तरीके से खेला भी। तो 1 रन लेकर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास 6 ओवर के बाद। अब स्कोर हो चुका है 53 रन, 10 रन आए इस ओवर से। तो 6 overs gone, it's 53 for 1।
और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं परेश। क्या बात करें हम इस खिलाड़ी के बारे में, एक हर फन वाला खिलाड़ी, एक ट्रू ऑलराउंडर सभी मायने में, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, क्षेत्र रक्षण हो, तीनों ही डिपार्टमेंट में अव्वल दर्जे का ये खिलाड़ी। मात्र 1 विकेट दूर 200 विकेट से अपने कैरियर के। पहली गेंद खराब गेंद, भाग्यशाली रहे कि गेंद और बल्ले का तालमेल नहीं हुआ, वरना गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाती। पहली गेंद जैसे कि कहा जाता है स्पिनर्स के लिए एक वार्म अप डिलीवरी, हाथ खुलने चाहिए। और इस गेंद को देखने के बाद मान सकते हैं कि हाथ खुल गए हैं। बढ़िया लेंथ पे ये करी गई ये गेंद। और इनकी गेंदबाजी में सभी वेरिएशन है, वो लेग स्पिन भी फेंक सकते हैं, ऑफ स्पिन भी फेंक सकते हैं, टॉप स्पिन भी फेंक सकते हैं। और ये लीजिए, इस विकेट के साथ परेश के 200 विकेट पूरे होते हुए। ऑफ स्पिन भी फेंक सकते हैं, टॉप स्पिन। क्या कीर्तिमान हासिल किया है यहाँ पर। और ये लीजिए, बल्लेबाज को यकीन भी नहीं होगा, वो अनुमान भी नहीं लगाया होगा उन्होंने, जिस प्रकार उन्होंने पहली गेंद की थी इस ओवर की। लेकिन अच्छे खिलाड़ी, अच्छे गेंदबाज को कमबैक करने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। वही कर दिखाया है यहाँ पर परेश ने। इस गेंद को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाए। टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने गेंद फेंकी थी, अगर स्लो मोशन में हम देखें तो ये गेंद दूसरा फेंकी गई थी परेश द्वारा। सफलता प्राप्त किए हैं, एक अच्छे बल्लेबाज को पवेलियन भेजा है। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं श्रेयस, सेटन वॉरियर्स की तरफ से। ये कांटे का मुकाबला होने वाला है, ये तो तय है, एक घमासान मुकाबला होने वाला है। दोनों ही तगड़ी टीम है। बहुत ही बढ़िया गेंद, एक बार फिर फ्लाइटेड डिलीवरी राइट हैंडर के लिए श्रेयस, और श्रेयस ने इसे कलाइयों के सहारे खेल दिया ऑन साइड में, 1 रन लेकर अपना खाता खोलते हुए। ये लीजिए, बड़ा शॉट लगता हुआ प्रशांत, जीवन दान मिला है, यकीन नहीं होता। जी हाँ, प्रशांत एक बार फिर चैलेंज को अपनाया था, कबूला था उसे, घुटनों पे गए और उसे स्लॉक कर दिया था ऑन साइड में। खिलाड़ी को हिलने का भी जरूरत नहीं था। कहीं ना कहीं रिवर्स कप स्टाइल में पकड़ने का वो प्रयास, गेंद उनके हाथों से छिटकता हुआ। एक और मौका, बहुत ही तेजी से खेला गया ये शॉट, हार्ड हैंड से खेला गया ये शॉट, ट्रेवल कर रहा था लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में बढ़िया प्रयास किया परेश ने। और इस प्रकार के कैचेस पकड़े नहीं, चिपके जाते हैं। ये ऑफ स्पिनर, यहां जब कोई भी खिलाड़ी नया नया क्लब में खेलने जाता है तो उसे कोच सीख देता है। स्पिनर के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए एक सीख ये दी जाती है कि आपको उसके हाथ को देखना है, रीड करना होता है गेंद को, जैसे ही गेंद उनके हाथ से निकले। और अगर आप स्पिनर के गेंद को रीड कर पाने में सक्षम हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो आप उनके खिलाफ रन बटोरने में भी कामयाब हो जाएंगे।
और अब गेंदबाजी करने आए हैं धीरज, और उनका स्वागत किया है 4 रन से प्रशांत ने। एक रिस्टी लेग का स्पिनर है धीरज, जो कि बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रहा है अब तक उनके लिए। अपने 3 मैचेस में बटोरे हैं 8 विकेट। और अगर उनकी इकोनॉमी रेट की अगर बात करें, अब तक 5.91 का इकोनॉमी रेट है। और एक स्पिनर के लिए 6 के अंदर आप अगर रन देते हैं प्रति ओवर तो काबिले तारीफ। ये खराब गेंद, फुल टॉस की ये गेंद, और ये गेंद गई है स्टेडियम के बाहर, इस ग्राउंड के बाहर, मिड विकेट के क्षेत्र में। अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहां पर प्रशांत, गेंद उनके जोन में, उनके पाले में फेंकना एक गुनाह से कम नहीं। और इस प्रकार की गेंद अगर उनको फेंकी जाएगी तो वो आपको दिन भर सीमा रेखा के बाहर ही दिशा दिखाएंगे। एक और फुल टॉस और नतीजा वही। हालांकि रीजन इस बार मिड विकेट के क्षेत्र के दाएं तरफ। एक और फुल टॉस, और ये शॉट प्रशांत का फेवरेट शॉट नजर आता है। आसान शॉट नहीं होता घुटनों पे जाकर इसे स्लॉग करना, लेकिन जिस प्रकार ये खेल रहे हैं नजर आता है वो प्रैक्टिस जो ये बिताते होंगे नेट्स में। यहाँ कई बार देखा गया है फुल टॉस गेंद को भी बल्लेबाज ने टॉप एज किया है। ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेलना बहुत ही कठिन शॉट है ये, लेकिन जब आपका प्रयास, आपका अभ्यास अच्छा हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं। वही दिखाते हुए यहाँ पर हमें बल्लेबाज प्रशांत। हालांकि एक बड़ा ओवर अब तक 17 रन आए हैं इस ओवर से, और धीरज चाहेंगे कि आखिरी गेंद डॉट या विकेट के साथ इस ओवर की समाप्ति करे, लेकिन बल्लेबाज उनका इरादा कुछ और। इस बार श्रेयस ने अपने हाथ खोले और खेल दिया है इसे स्वीपर कवर में 4 रन के लिए। तो 21 रन बटोरते हुए उस ओवर से 8 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। स्कोर हो गया है 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 77 for 2 after 8 overs। तो एक अच्छे गेंदबाज के ओवर को महंगा ओवर साबित बट में तब्दील किया है सैटर्न वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने। परेश लेकर चले अपना दूसरा ओवर। अपने पहले ही ओवर में सफलता प्राप्त किया है, उसी कॉन्फिडेंस से गेंदबाजी करते हुए। हल्की सी लेंथ जो थी, शॉर्टर ऑफ लेंथ थी, लेकिन बल्लेबाज उस गेंद पर कोई भी रन बटोरने में कामयाब नहीं रहे।
ये अंदर की तरफ आती हुई गेंद थोड़ी सी तेज भी फेंकी गई थी, फ्लैटर डिलीवरी थी और श्रेयस ने बहुत पहले ही इस गेंद को पढ़ लिया था। उसने कलाइयों के सहारे खेल दिया था ऑन साइड में 1 रन के लिए। और अब देखना होगा परेश किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं प्रशांत के खिलाफ। एक हिटिंग जोन है प्रशांत का, अगर उस हिटिंग जोन में गेंद पड़ी तो नतीजा हम सभी को पता है। ये लीजिए फुल टॉस की गेंद सेट बल्लेबाज के लिए। तो नतीजा हालांकि ये फुल टॉस फेंकना चाहते नहीं थे, फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकना चाहते थे, लुभाना चाहते थे बल्लेबाज को, लेकिन उस अटेम्प्ट में नाकामयाब रहे गेंदबाज परेश और फेंक बैठे एक आसान सी डिलीवरी बल्लेबाज के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है यहां पर प्रशांत द्वारा। ये बढ़िया गेंद और बढ़िया क्रिकेट और ये रन आउट का मौका नौ स्ट्राइकर्स एंड पर। यस नो दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, और अगर डायरेक्ट हिट होता नौ स्ट्राइकर्स एंड पर तो करीबी मामला हो सकता था। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज अभी भी क्रीज पे सुरक्षित, कोई जोखिम नहीं, कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद, देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय होता है। जी हां, बल्ले से लगता हुआ ये बाहरी किनारा और कोई भी खिलाड़ी स्लीप में मौजूद नहीं था। थर्डमैन के खिलाड़ी ने गेंद को चेस किया, गेंद का पीछा किया, लेकिन गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। उस 4 रन के साथ स्कोर हो चुका है 89 रन 89, 9 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। और अब ये पार्टनरशिप भी खतरनाक साबित होता हुआ 35 रन की पार्टनरशिप में है 16 गेंदों में। कई बार इस टूर्नामेंट में हमने देखा है ये जो 7 से लेके 15 ओवर का ये मिडल ओवर जो होता है, मोमेंटम शिफ्ट होते हुए देखा है हमने। एक बार फिर इन्वेडर्स अपनी पकड़ बनाए रखे थे शुरुआती 5-6 ओवर्स में, लेकिन पिछले 2-3 ओवर्स में बड़े ओवर्स में तब्दील किया है इन्वेडर वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने, और अब मोमेंटम गेन कर लिया है उन्होंने। करंट रन रेट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10 रन प्रति ओवर से बल्लेबाजी होती हुई। खराब गेंद, पटकी हुई गेंद, और उसे सही नसीहत दिया है यहाँ पर बल्लेबाज श्रेयस ने। कुछ इक्के दुक्के अच्छी गेंद जरूर पड़ रही है, लेकिन हर एक ओवर में बल्लेबाज को एक मौका मिल जाता है रन बटोरने का, और वो काफी है। जैसे ये अच्छी गेंद है, और जब अगर आपको विकेट प्राप्त करने हैं, आपको दबाव बनाने होंगे, दबाव बनाने के लिए आपको लगातार डॉट गेंद फेंकनी होगी, बल्लेबाज को बांध के रखना होगा। एक ही बल्लेबाज को 3 से 4 डॉट गेंद कराइए आप, यही रणनीति होगी भी, हर एक गेंदबाज वही चाहता है। एक बार फिर मौका मिला था बल्लेबाज को हाथ खोलने का। ऑफ साइड में अगर हम बात करें, मात्र 2 खिलाड़ी, एक स्वीपर कवर और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हुए 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे में। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी की हम बात कर रहे थे। डॉट गेंद जितनी ज्यादा होगी, जितनी बिंदु गेंदें ज्यादा होंगी, उतना दबाव बल्लेबाज पर बनेगा।
और ये मौका बनाया था, प्रयास भी बढ़िया वहां पर खिलाड़ी द्वारा। आसान नहीं होता इस प्रकार की कैच पकड़ना, काफी अभ्यास की जरूरत होती है। और आउटफील्ड काफी तेज है, मौका बनाया अगर आप था, गेंद को गैप में प्रयास भी ढकेल बढ़िया देते वहां हैं पर खिलाड़ी द्वारा। तो आपको वैल्यू मिल जाता है आपके शॉट्स का। 4 रन मिल गए हैं बल्लेबाज श्रेयस को, और इस 4 रन के साथ स्कोर हो चुका है 97 रन। ये बढ़िया क्रिकेट, उस ओवर में जितने रन चाहिए थे वो मिल चुके हैं, तो बड़ा शॉट या जोखिम भरा शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, और यही सही समझा बल्लेबाज ने। आखिरी गेंद थी ड्रिंक्स ब्रेक के पहले की, उसे सुरक्षित रक्षात्मक तरीके से खेला। 10 ओवर के बाद अब स्कोर बने हैं वॉरियर्स के 97 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब समय हो चुका है एनर्जॉल ड्रिंक्स ब्रेक का। तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अब खेल शुरू हो चुका है।
11वां ओवर से लेकर 15वां ओवर फेंका जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज छोर से। सटन वॉरियर्स जो कि बहुत ही बढ़िया स्थिति में 97 रन मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर ये टीम अग्रसर है 200 के आंकड़े को छूने के लिए। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी करने आए हैं शादाब और अपनी पहली ही गेंद दिशा से भटकते हुए दिशाहीन गेंदबाजी लेग स्टंप के काफी बाहर। साबू जो कि बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर है, उस गेंद को पकड़ने का रोकने का कोई मौका नहीं उन्हें भी। 5 बोनस रन जुड़ जाएंगे सटन वॉरियर्स की टीम के खाते में। 5 रन के साथ 100 रन पूरे होते हुए 102 रन महज 10 ओवर में। छूने के लिए यह बढ़िया गेंद, हालांकि हल्की सी रूम जरूर मिली थी बल्लेबाज को उस शॉट को खेलने का, ऑफ साइड में कट करने का प्रयास था, लेकिन संपर्क गेंद और बल्ले का बिल्कुल भी नहीं। डॉट गेंद। प्रशांत अब बल्लेबाजी कर रहे हैं 45 रन पर, महज 25 गेंदों का सामना किया उन्होंने। विकेट कीपर है, उस गेंद को बाहरी किनारा और ये सफलता मिली है शादाब को, 5 बोनस रन क्योंकि जुड़ बहुत जाएंगे तेजी से सटन स्लैश वॉरियर्स किया की था, टीम के खाते में। गति भी 5 अच्छी रन थी के गेंद साथ में 100 और रन ट्रैवल कर पूरे रही होते थी। हुए थर्डमैन की खिलाड़ी जो कि 30 गज के दायरे में, उन्हें हिलने की भी जरूरत नहीं थी, धीरज थे वहां पर खिलाड़ी, उन्होंने नहीं की कोई भी चूक 45 और रन में झटका 25 लगता हुआ गेंदों का बड़ा सामना विकेट किया प्राप्त उन्होंने। होता हुआ प्रशांत जो कि महज 5 रन दूर से अपने बाहरी किनारा अर्धशतक से और ये सफलता मिली है निराश शादाब को। हताश लौटते हुए पवेलियन वापस एक अच्छी पारी का अंत किया है। पर महज 25 गेंदों का सामना किया उन्होंने। बाहरी किनारा और ये सफलता मिली है शादाब को। बढ़िया गेंदबाजी शादाब जो कि जाने जाते हैं ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं विकेट प्राप्त करने के लिए, और एक बार फिर अपने पहले ही ओवर में सफलता प्राप्त किया है। एक अच्छे बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। और एक प्रशांत के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए हैं मंजूनाथ, जो कि इनका कैरियर स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो 175 का है। मौका बन सकता है और ये मौके को भुनाया है। ये बहुत बड़ा झटका लगता हुआ सटन वॉरियर्स को। बहुत अहम रोल अदा करते हैं मंजूनाथ, जब भी सटन वॉरियर्स ने बड़े रन बनाए हैं इनका हाथ जरूर, लेकिन आज बिना खाता खोले लौटते हुए पवेलियन वापस एक ही ओवर में 2 दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है शादाब ने। मौका बन सकता है और ये मौके को भुनाया है।
क्या हो रहा है ये शादाब द्वारा? पहली गेंद बहुत ही बाहर लेग स्टंप से 5 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद क्या कमबैक किया है। एक भी रन खर्च नहीं किए उस एक्स्ट्रा गेंद, एक वाइड गेंद के बाद, और 2 सफलता भी प्राप्त किए हैं। आखिरी गेंद इस ओवर से, और एक और विकेट हो सकता था अगर ये गेंद सीधे स्टंप्स पर होती, क्योंकि गेंद ने बिल्कुल भी उछाल नहीं लिया। लैक ऑफ बाउंस, और बल्लेबाज अनुराग बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए उस गेंद के लिए, उस शॉट के लिए। 11 ओवर के बाद स्कोर है वॉरियर्स का 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब कप्तान ने गेंद सौंपा है सागर को, जो कोई उनके एक प्रमुख गेंदबाज में से एक, अपना तीसरा ओवर लेकर आए हैं। और बढ़िया कप्तानी भी यहां पर इन्वेडर्स के द्वारा। जानते हैं क्रीज पर जो मौजूद बल्लेबाज हैं, दोनों ही बल्लेबाज अहम हिस्सा अपने टीम के, और दोनों ही बल्लेबाज, माफ कीजिए, खास करके अनुराग क्रीज पर नए हैं। और यहां से अगर एक या दो और सफलता प्राप्त हो जाती है तो इस मैच में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं। कॉर्ड बिहाइंड की अपील की जा रही है, उस अपील में विश्वास भी और उत्साह भी, लेकिन अंपायर वो अपने निर्णय पर अटल। और ये लीजिए, गेंद टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज इसे पुल करना चाहते थे, हालांकि ये पुल करने वाली लेंथ बिल्कुल भी नहीं थी। अनुराग जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, आज अपने बल्लेबाजी से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। नाखुश जरूर होंगे वो अपने शॉट सिलेक्शन को लेकर। बिना खाता खोले पवेलियन वापस। और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए यहां पर इन्वेडर्स के गेंदबाजों द्वारा। तो पिछले 9 गेंदों में 3 सफलता प्राप्त किए हैं इन्वेडर्स ने। और नतीजा अब यह हो गया है कि सेटन वॉरियर्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। तो हम कप्तानी की बात कर रहे थे, कप्तान ने गेंद सौंपा था अपने प्रमुख गेंदबाज को, सागर को, और जिस चीज के लिए उन्हें गेंद दी थी उस चीज को पूरा कर दिया है उन्होंने। शानदार कप्तानी और शानदार गेंदबाजी, और ये एक और झटका लगता हुआ। हर्षल चौहान बल्लेबाजी करने आए थे, पहले गेंद का सामना कर रहे थे सागर, जो कि बहुत ही लय में गेंदबाजी करते हुए पूरा कर दिया है उन्होंने। तेजी से अंदर की तरफ आई, पैड पे टकराई, और अंपायर ने शानदार कुछ ही कप्तानी सेकंड्स और के शानदार अंदर अपनी उंगलियां आसमान की तरफ दिखाते हुए बल्लेबाज को जाना होगा डगआउट में। एक और बल्लेबाज बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटता हुआ।
काफी काफी क्रेडिट जाता है, काफी श्रेय जाता है कप्तान को यहाँ पर। जो सोच थी उनकी वो बहुत ही बढ़िया। जैसे हमने पहले भी कहा था, जब आपके पास मोमेंटम हो तो उस मोमेंटम को कैरी करना चाहिए। पिछले ओवर में 2 विकेट, इस ओवर में 2 विकेट और सागर हैट्रिक बॉल। और हैट्रिक बॉल को नकारा खेला रमेश ने सुरक्षित रक्षात्मक तरीके से। गेंदबाज के हाथों में रन लेने का कोई भी मौका नहीं, कोई भी इरादा नहीं। अभी भी अटैकिंग फील्ड और ये बार फिर बैट पे जाके टकराई, रन आउट का भी मौका था। सभी खिलाड़ी अपील अंपायर की तरफ, गेंद ओवर थ्रो हो चुकी है, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए भाग चुके हैं, दूसरा रन भी पूरा कर लिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट यहां पर इन्वेडर्स द्वारा। तो एक और सफल ओवर की समाप्ति होती हुई सागर को मिले 2 विकेट, मात्र 3 रन उस ओवर से। 12 ओवर के बाद अब स्कोर बने हैं 105 रन 6 विकेट के नुकसान पर। Shadab will continue. Second over for him. He has already got 2 big fish in his kitty. And could have been 3. He has an unorthodox action and it's not easy for the batsman to pick him. A bit of uncanny action. Excellent shot, but the fielder is there. Straight to the cover, single taken. Now it's on Shreyas now. He has to be at the crease for some more overs. Onus on his shoulder now to take his team to a decent total. And what a shot from Ramesh, straight in the hand of the fielder at point. Pankaj Mishra was there and he did well to field that ball. Also limiting a run only to 1. Half volley delivery, driven down the long off. Lovely bowling. Shadabi doesn't bowl with a long run up, sticking to the basics, not trying too many things, not experimenting lot of things. This one pitched on the middle, struck on the pads. Luckily, the batsman didn't get any bat onto it. Fielder was there at the fine leg, fielded by him. No run taken. End of a tight over. Only 3 runs coming in that over. 13 gone, 108 for 6.
109 for 6. 13.5 and Sagar bowling his last over of his spell. Has it gone the distance? Yes, it has. And once it looked like that the fielder will get underneath it, but eventually ball goes sailing over him. Excellent connection. Ramesh, what a shot under pressure from him. Sensible from Ramesh after scoring a maximum of the previous delivery. This one was pitched on a good length delivery, just leaning forward and playing with a soft hand, crossing over for one. Lovely delivery, but equally well played by the batsman. They have already got a maximum of in this over and some singles. 117 on the board. What a shot! Stand and deliver stuff. There was nothing wrong with that delivery. But the shot from Ramesh, it will make any top order batsman proud. Well, the way he is hitting, the way he is batting, one would question what he is doing so down the order. In the air, over the bowler's head. And a single. Single taken off the last ball of the 14th over, and the score is now 122 for 6 after 14. 14 runs coming off that over. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, हालांकि एक एक मिनट हाँ, जिस दिशा में खेलना चाहते थे गेंद उस दिशा में नहीं गई. बाहरी किनारा लगा था, गेंद थर्ड मैन के खिलाड़ी 30 गज के दायरे में. मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास उस गेंद को रोकने का. दिशा कोई भी हो, नतीजा जो चाहते थे वो मिला है बल्लेबाज को. और चौका बटोरा है रमेश ने. गेंद हवा में, क्या ये कैच ले जाएंगे, लपकी जाएगी? जी हाँ. एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास रमेश द्वारा, लेकिन संपर्क गेंद और बल्ले का ठीक नहीं. बढ़िया कैच वहां पर कवर के खिलाड़ी द्वारा. हाँ एक सागर, हाँ सिंगल, सेकंड 6, सिंगल सिंगल
Boundary. Single. 122. अरे 13 ओव्हर मध्ये 108 होते. एक 126 for 7. 14.2 overs. Invaders, they need 3 good balls to wrap up the things here. Outside edge, and it has been taken. Sabu, you beauty. What a reflection shown from the wicketkeeper. And it's the standing captain in this game, Sabu. He had so less time to react. And he has taken a blinder here. Dheeraj comes in, Dheeraj goes out. What a collapse, what a batting collapse we are seeing here. Certain warriors at once, they were looking to set a mammoth total. Now they are in all sort of trouble here. It's a hat-trick delivery coming up. Hemang Natkani to face Azim. And what a reply. All the fielders were inside the circle and batsmen. A half volley delivery to him, room on offer. And he goes up and over everyone through the cover for 4. Very few batsmen coming at number 9 or 10 facing a hat-trick delivery and scoring a boundary in some fashion. Hemang Natkani for you here. A full toss delivery, high full toss delivery, way above the waist height, a beamer delivery this is. And it's a free hit delivery coming to the batsman. Lovely ball. And very well played by Hemang. When you have the license to play any shot you want, some batters would have played some fancy or glory shot, but Hemang, he just played it at the merit of the ball there. Driven firmly, but straight to the cover. Saga was there. Dot ball to finish off. 15 overs gone. It's 132 for 8.
Saturn Warriors, for the third time in this tournament, they are batting first. And as we did mention earlier, they have been undefeated. Dheeraj has been brought into the attack. Today he looked a bit off color. Not the leg spinner we have seen from him. Lovely delivery, a loopy delivery to the right hander. Hemang Nadkarni, he is in no mood to go for the big one. Well, he goes for it. And Paresh, a very, very rare misfield from him. Well, he goes for it. Nevertheless, a boundary for Saturn Paresh. Warriors. A boundary from Hemang Nadkarni, who checked his shot at very last. Good bowling this by Dheeraj now. Bowling in a good control, bowling on a good length, good line. And that's what one could or should expect from the bowler that he is. Lovely delivery. Batsman was in two mind. Earlier he wanted to come forward, but eventually decided to cut it off the back foot, ending up playing a dot ball. Once again off the back foot, just a push, just a tap to the point. A bit of a hesitation, bit of a miscommunication between the batsmen. But no damage done. Both the batsmen are home safely. Single taken, 139 for 8. Last ball of this over. Full toss delivery. Fielder in the deep, fielded by him. Single taken. Strike will be retained by the batsman. 16 overs gone, 140 for 8. 4 overs to go. And what should be or what would be the target these batters must be having in their mind to defend? Change in bowling attack. Sunil is ready to bowl his first over and 17 for his team. He'll be bowling right arm around the sticks to the right hander, probably bowling in a hope to bowl an angle delivery to take the angle away from the right hander. Ended up bowling outside the tram line.
Full toss delivery. Everyone missed it. Not only the batsman, even the wicket keeper Sabu. Even he wasn't expecting that delivery to come to him. It was a full toss delivery. Batsman fails to connect with it. Play Enemies was looking to play a fancy drive off the offside. Two good balls is all what invaders need. It has flied off the left of the fielder at point. What invaders need. Room on offer to the right-hander, and he just opening the face of it, finding the gap to the perfection between third man and point. Boundary number 3 for Hemang Kearney. This is very important contribution down the order. Once again, outer edge of the bat, call for 2, but they will have to settle only for 1. Certain Warriors, they have a good bowlers in the bowling lineup. 147 on the board. Still 20 balls yet to be bowled in this inning. Lovely delivery. This is the kind of delivery you need to bowl on the surface, where the ball is gripping a bit, stopping a bit. There is a help on offer for the medium pacer or the spinners. If you have those cutters, if you can bowl those cutters, those leg cutters, you can be very effective on the surface. Dot ball to finish off. 17 gone, 148 for 8. $17 gone, 148 for 8. Partnership of 22 of just 16 balls. And he gets a wicket. It was a googly. Batsman couldn't read it at where. He went for a slog sweep, slog shot on the onside, misses it completely. And it's a timber. The furnitures are disturbed. And Dheeraj has a wicket against his name. Hemang Kearney. He goes after scoring 16 of 12. And he gets a wicket. It was a
What a turnaround this is. Saturn Warriors, they were 102 for 2 after 10 overs. And last 46 runs they have scored, and with the cost of 7 wickets. Excellent from the Tussle invaders. They have bowled brilliantly. All the bowlers. A full toss delivery, struck on the pads. Down the track. Falls just short of fielder at long on. Paresh was there. And since the last man is in, it's the last wicket, last pair. Shreyas has to play a big shot here. He goes for a sweep. Was looking to target the shorter boundary on the onside at the square leg region. Waits for it, waits for it. Just opening the face of the bat, tapping it on the offside, taking a single. Shreyas is doing what every middle order batsman does when he has number 11 alongside him. Rotating the strike, taking the strike back, letting the batsman only face the last ball of that over. He defended it. 18 gone, 150 on the board. Sunil ready to bowl the 19th over. Slash and a miss. It was banged in a shot. Batsman was looking to cut it on the offside. No connection whatsoever. Once again off the back foot, and this time finds the gap into the fence for 4. Not an ideal length to bowl to the batsman likes of Shreyas. He loves playing the shot off the back foot. He is so strong in that region. Down the ground this time. Wide of long on. So now the strike is with the number 11. Shekhar is there.
Bottom end of the bat, and they are bracing away for one. Misfield by the fielder at third man. And they have got a boundary. This is not acceptable. Every single run counts. Every single run matters. When you are playing against the team who is sitting at the top of the table, you cannot afford to be sloppy in the field. You have to be on your toes. Change of a pace. But says who? The number 11 is at the crease. A flat batted slap across the line fetches him another boundary. That's 2 in 2 for him. He doesn't like the tag of number 11. He's batting like a middle order batsman. Take that. A dot ball to finish off. So the confidence Shreyas has shown on his partner. He paid you off. 163 for 9 after 19 over. Last over to go, and this is a good total. If not a good total, this is a very competitive total. At once 150 wasn't possible for them, but credit goes to their batters who came to bat down the order. Pankaj Mishra to bowl the last over of the inning. And the batsman goes high, but not high enough. Fielder from long off, running to his front and takes a good catch. Shala was there. It was traveling. It wasn't that easy, but he made it look so easy. And with that wicket, Saturn Warriors, after winning the toss, opting to bat first, posted a total of 163, 164 to chased out by Invaders. And with that chase, we will be back in shortly.
All right, then to chase down 164. Sabu. What a reply from him. Look at that. A bit of improvisation seen very early in his inning. He is a fearless character, fearless batsman, and he loves challenges. Manjunath is a good bowler with a new ball, and playing a shot against him speaks about the quality of a batsman Sabu is. Shuffles across, plays it down the ground. Ajinki is there, fielded by him, single take in. Defending a total of 164. Certain Warriors. Shorter length of a delivery. And it has been punished. Ball goes into the fence of the mid wicket. Third boundary coming in the very first over. All three boundaries have been scored by Sabu. Warriors. And of an expensive first over. What a start this from Invaders. 14 for none. Let me tell you, this is a good wicket to bat on against the medium pacer or the pacer. There's no extra pace on offer. There's hardly anything on offer for the pacer, but it's a friendly wicket for the spinners. Spinners have been successful so far. And if we see the top wicket takers list, the spinners are ruling there. Ramesh. He is a quality spinner. The kind of action that he is, the way he releases his delivery. Somewhere he looks to be inspired from the Rashid Khan. His releasing point, which is very close to his ear. And every time he does that, he doesn't bowl lots of flighted delivery. And this time, it does a mistake. Bowling to the strength of the batsman. And as soon as the batsman sees the ball in his arm, he needed no second invitation to send it out of park. What a shot from Mohammad Naveed. Struck on the pad. This one didn't turn at all, straightening a bit. Batsman was in anticipation of playing it down the leg. Bowls lots of googlies, Ramesh. Just what the young Indian bowler Ravi Bishnoi does. They don't. They are a leg spinner, but they don't bowl too many leg spinning deliveries. They rely too much on their googlies, their top spinners, which doesn't turn much, which just
holds the line of the delivery or comes into the right hander and ball goes out for the left hander. So 6 only a maximum score of that over. 2 overs gone, 20 for none. Now the captain has handed the ball to their bowler who has taken most wicket for his team. Hemangnath Kearney it is. As far as he has played 4 matches and he has got 10 wickets. Be it even his economy rate is brilliant. Hemangnath Kearney, very experienced campaigner, plays lots of matches. Full toss delivery, drilled it down the ground. Excellent bit of work done by Ramesh there. Moves quickly to his left and is stopping the ball and the batsman only for 1. So we were talking about the Hemangnath Kearney. The key in his bowling, why he has been so successful. The one thing is that he doesn't leak too many runs. He contains the batsman, doesn't bowl freebies. Look at that. It was an unplayable delivery. Extra bounce on offer there. Batsman was beaten completely. And wicket keeper, he does the schoolboy mistake there, letting the ball sneak under his leg. Off the back foot this time. Goes to the long off. So not only he has the ability of taking wickets, but also his economy rate in this tournament has been top notch. Only 6.09. And this is good captaincy from certain warriors as well. So far in this tournament, we have seen Hemangnath Kearney. He has been brought into the attack after 6 overs, mostly into the middle overs. He comes out to bowl, but in this match, they don't have much to defend and they need wicket right up. Lovely delivery and very well played by Mohammad Nawid as well. It was coming into him. He played it late with a soft hand. It goes past the bowler and a single was on offer. Single taken. 3 overs gone. And Invaders, they are playing at the run rate of 9.33 at the moment. 28 for none.
और अब गेंदबाजी में बदलाव देखने मिला है। नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और शुरुआत की है एक अतिरिक्त रन से। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये फेंकी गई ये गेंद। कौन है बॉलर सर? धीरज कुमार है गेंदबाज। और कई बार देखा है गेंदबाजों द्वारा पहली गेंद जो होती है उस मार्क पे नहीं फेंकी जाती है, तो कहीं ना कहीं एक वार्म अप की कमी नजर आती है खिलाड़ियों के द्वारा, गेंदबाजों के द्वारा। ये पटकी हुई गेंद, बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले का, और बढ़िया थ्रो। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट मंजूनाथ द्वारा। जैसे ही देखा साबू थोड़े से लेजी, थोड़े से कैजुअल, आसानी से स्ट्रोल करके जाना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर। एक बुलेट थ्रो उनकी तरफ से और सही समय पर अपने क्रीज पर सुरक्षित साबू। बढ़िया गेंद और उसे अच्छे से बढ़िया तरीके से खेला। What a cracking sound of the bat. No stopping that. Fielder in the deep. He could have done better. What a cracking sound. Good batting this. Good batting from Invaders. From both the batters, not one batter particularly. Be it Sabu or be it Muhammad Naveed. Anything loose for them, they have made sure that they would send it to the fence. 4 boundaries and a maximum have been scored so far in this inning. This is the one length and line that the bowlers have to bowl at consistently. बढ़िया शुरुआत यहां पर मिला है इन्वेडर्स को। 37 रन बन चुके हैं, 5वां ओवर गतिमान बिना किसी नुकसान के।
और बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप चेस करने उतरते हैं। आपकी सलामी जोड़ी जो है बहुत बड़ा भूमिका अदा करती है। पटकी हुई है गेंद और ये अगर ये कैच लपका जाता तो बहुत ही शानदार कैच में तब्दील हो सकता जिस था। करने उतरते हैं बहुत आपकी ही बढ़िया सलामी प्रयास वहां जोड़ी पर जो है रमेश द्वारा। बहुत बड़ा भूमिका अदा उस करती एफर्ट है। के लिए पटकी हुई है तालियां बजनी गेंद चाहिए और और उनके सभी खिलाड़ी ये उन्हें एफर्ट की दाद भी देते हुए जैसे ही पटकी हुई गेंद देखी साबू टूट पड़े और एक बेहतरीन पुल शॉट खेला ऑन साइड में। खराब गेंद। देख रहा होगा अंपायर का क्या निर्णय होता है। फुल टॉस की ये गेंद और जी हाँ, अंपायर का मानना है कि वेस्ट साइड के काफी ऊपर की ये गेंद और 2 रन जुड़ जाएंगे टीम के खाते में। एक रेयर मिस्टेक हम कह सकते हैं हेमंग नाटकर्णी द्वारा। फ्री हिट की डिलीवरी मोहम्मद नावीद के लिए और बढ़िया गेंद, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। बढ़िया क्षेत्र रक्षण रमी द्वारा। तेजी से गेंद की तरफ आए, अपने बाएं तरफ बढ़िया डिस्टेंस कवर किया और मात्र 2 रन लेने में बल्लेबाज कामयाब। इस ओवर में थोड़े से अपने लाइन लाइन और लेंथ को लेकर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं गेंदबाज, जो कि अमूमन तौर पर देखा नहीं जाता है। बढ़िया क्षेत्र रक्षण प्रशांत द्वारा। कई दफा हमने बल्लेबाजों की फुटवर्क की दाद दी है, तारीफ की है बल्लेबाजों की फुटवर्क की, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी प्रशांत के खिलाड़ी जो कि कवर पे फील्ड कर रहे थे, उनके फुटवर्क की तारीफ करनी होगी। बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण। ब्लॉक होल में फेंकी गई ये गेंद, जड़ में गेंदबाजी करते हुए और उस गेंद को जड़ से निकाल कर खेला है ऑन साइड में। काफी समय दोनों ही बल्लेबाज के पास चहलकदमी करते हुए, छोर बदलते हुए और एक रन भी जुड़ते हुए टीम के खाते में। 46 रन बिना किसी नुकसान के। आखिरी गेंद 5वें ओवर की। फुल टॉस की ये गेंद, हालांकि उस गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेंकने में नाकामयाब रहे। बल्ले का मुख खोलना चाहते थे, एक बड़ी गैप है पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के बीच में, उस गैप में गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे गई डीप कवर के खिलाड़ी के हाथ में। 1 रन से संतुष्ट। 5 ओवर का खेल हो चुका है, पूरा स्कोर बना है 47 रन बिना किसी नुकसान के।
बढ़िया शॉट और खराब क्षेत्र रक्षण डीप में। जब आपके पास इतने रन ना हो तो आप की जो फील्डिंग है वो बहुत अहम हो जाती है। आपको एक एक रन बचाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर रन दिए जा रहे हैं मुफ्त में। इस बाउंड्री के साथ 50 रन की साझेदारी होती हुए सलामी जोड़ी साबू और मोहम्मद नाविद की कामयाब जोड़ी। बढ़िया शॉट और एक बार फिर बाउंड्री मिलेगी, इस बार गेंदबाज के सीधे। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए साबू पिछले 2-3 पारियों में बहुत ही बढ़िया लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, बढ़िया फॉर्म में हैं। उसी फॉर्म को कायम करते हुए इस पारी में थ्री 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है इन्हें, साबू को। वो काबिलियत है कि मैदान के चारों दिशा में ये शॉट खेल सकते हैं। और विकेट कीपर बल्लेबाज को जब आप 20 ओवर पूरा विकेट कीपिंग करें और एज अ ओपनर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए, आसान नहीं होता है। तो फिटनेस की भी दाद देनी होगी। और जिस प्रकार का ये वातावरण है, तपतपाती धूप है, एक तो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स अ टोल ऑन द फील्डर्स टू प्ले इन सम circumstances in such weather। और ये गेंद जो कि बिल्कुल भी उछाल नहीं प्राप्त की। थोड़े से सफल किए थे और ये बेहतरीन प्रयास प्रशांत द्वारा। हालांकि ऐसा प्रतीत जरूर हो रहा है कि थोड़े से लेट रिएक्ट किए। सफल किए थे और ये बेहतरीन प्रयास प्रशांत द्वारा। यहाँ जब आप 30 यार्ड सर्कल में फील्ड करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, आपको कहा जाता है कि आपको स्टार्ट लेना होता है। और प्रशांत हालांकि प्रयास उनकी तरफ से बहुत ही बढ़िया, उस प्रयास के लिए सारे नंबर मिलेंगे, सारी तारीफ के पुल माने जाएंगे, लेकिन जो शुरुआत उनको करनी चाहिए तो वो शुरुआत नहीं हुई है। फुल टॉस की ये गेंद, खराब गेंद और खामियाजा भुगतना होगा गेंदबाज को। यहां पर इस प्रकार की गेंदबाजी से आप साबू जैसे बल्लेबाज को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएंगे। ये एक न्योता मिलता है उन्हें, आमंत्रण मिलता है उन्हें बड़े शॉट खेलने का, आसान रन बनाने का। उस आमंत्रण को कबूला और खराब गेंद को सही नसीहत दिया, खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए 6 ओवर का खेल पूरा, 65 रन बिना किसी नुकसान के। तो जब बल्लेबाजी करने आए थे, so the asking rate was 8.20 when invaders came out to bat, but at the moment they are scoring at 10.83.
And the spinner have been introduced here. And it's Ramesh. Is he bowling the right arm off spin? Well, that's the one variation that he is showing us. Normally, he bowls a leg spinner and a googly. Mainly a googly bowler he is. A half-tracker delivery to the right-hander. And these are easy runs on offer for the batsman. When you're defending a tiny total, I can't even say a tiny total. They have a good total on the board. Anything above 160 is a good total on the board. So I can put up like this: if they are not chasing, if they are not defending a big total, you need to find a way to get a wicket. And this is brilliant batting. Mohammad Nawi, just wait for it. Playing it late. And the fielder at the square leg was inside the circle. He gives it a chase and stops the ball. And also the run only for 2. 70 on the board, 6.4 overs. Hold the pose. That's what batsman Mohammad Nawi did after playing that shot. After playing that beautiful shot over the long on fence, he was just holding a pose for the cameraman there. That's what batsman Mohammad Nawi. It's the second maximum for him. And he was looking to make it 2-2 in this over. So after 7 overs, Tussle Invaders, they are in a driver's seat. 76 for none. Dheeraj Kumar is into the attack and straight away batsman just clipping it on the onside to take one. Catch it, the shout, and it's a catch practice for Prashant. And they are pumped up. They needed it desperately. And Mohammad Nawid, after playing a good hand, goes back to the pavilion, scoring 24 of 22 with the help of 2 maximum.
catch it, the shout, and it's a catch practice for Prashant. So finally, Dheeraj providing a much needed breakthrough. And after that wicket, one can see the body language has changed. Rizwan is the batter who comes out to bat at number 3. Ah. Excellent shot off the back foot, cuts it away. Third man couldn't stop it. It's a boundary for Rizwan. What a way to get off the mark. Excellent shot off the back foot, cuts it away. It was turning out to be a decent, more than a decent over. But boundary of the last over, spoiling the figure of the bowler. 5 came in that over, nevertheless a wicket over. 8 overs gone, it's 81 for 1. $83 required of 12 overs. 9 wickets in hand. And it has been driven down the ground through the cover. Excellent fielding effort. And they have taken only a single. Sabu is happy with the single, looking a bit tired. Almost chopped on with no footwork at all. He was in 2 mind. Ended up playing off the back foot. Inside edge. No runs. So 3 fielders protecting the boundaries on the onside, long on cow corner and deep mid wicket. No one is at square leg, a fine leg fielder who is inside the circle, a third man, a point and a cover. These 4 fielders are inside the circles. Played it on the up. This time right of the fielder at point. Ramesh was there.
And this was deliberately done by the batsman Sabu, playing it late, opening the face of the bat and finding the gap into the fence for 4. This time right. Now he is just one shot away, a boundary away from his half century. Excellent connection. It will take some fielding effort to stop it. He fields it, and that's a boundary for Sabu. Half century for Sabu. Boundary away from his What a batting. half century. Excellent connection. It will take some fielding up. Take that. The fielder at extra cover. Sabu keeping him busy. He is running everywhere, running to his right, to his left, and doing a brilliant job for his team this time. Almost saving 3 crucial runs. Single taken. Strike will be retained. 9 overs gone. 92 for 1. .22 is the current run rate, and if they keep batting like they are batting at the moment, it shouldn't take them long to reach home. Dheeraj will continue. And a fielder from deep mid wicket. He slipped, but did well to field the ball and limit the run opportunity only to 1. Good bowling. Dheeraj Kumar, the only bowler from Saturn Warriors who hasn't let the batsman score runs easily off him. Bottom end of the bat. Batsman was looking to play an aerial shot. Miscues it completely. And Sabu, after facing 29 balls so far in this inning, scored 54. Looking a bit tired here. Another excellent over. This is from Dheeraj. Scoring quick runs or scoring a boundary against him. The batsmen have found it a difficult task and almost played on. Luckily, the ball didn't rattles the stump. A dot ball to finish off an excellent over. Only a couple of runs in that over. 10 overs gone. It's 95 for 1. And it's time for a much needed refreshment break. It much needed Anazal drinks break.
All right, then the play resumes after a drinks break and a Zohal drinks break. 69 of 60 balls. It shouldn't be a difficult task for the Tussle invaders from here on. Warriors, Saturn Warriors. They need a mad inspiration from here on to turn around the things. Manjunath is ready to bowl with a great hope. And off the very first ball, Sabu was looking to go over the fine leg. Extension of an arm from the umpire. Wide is the signal from him. He is being questioned by the captain and the bowler. Good delivery. This one onto the stumps of the batsman. With the body language of Sabu, one can sense that he is a bit tired. Looking a bit tired. And as we mentioned earlier as well, it's not an easy thing to stand behind the stumps for 120 balls, more than 120 balls when you have an extra counted. And straight away, within a break of 10 minutes, you come out to bat as an opener. And what a placement there by Rizwan, using the pace of the bowler, opening the face of the bat and just playing it to the right of the fielder at point. Shorter boundary there. Smart cricket, this from Rizwan. Second boundary for him. And he was looking to make the third one for him. This one, a wild slog across the line. So many times we have seen batsmen getting a bit carried away. After you play a couple of good strokes, you want to keep playing those strokes. But after the previous delivery, Sabu has some words with his partner. And the very next delivery, Rizwan sensibly playing it, tapping to the point, taking a single. Struck on the pad, probably going down the leg. Fielded by the fielder at third man, but he couldn't stop the batsman to take one. 8 runs came in that over. 11 gone. It's 103 for 1. Hemang Notkarni is back into the attack. He goes aerial, but finds the fielder at long off, only for 1. Saturn Warriors, they need an over with a couple of wickets. They need to take wickets at regular intervals to stop the invaders.
Banged in shot. Slashes hard. Catch it was the cry, but into the no man's land. Fielder there, a deep third man. That's a wicket. Hemang Nadkarni is pumped up. They have got a big man here. Big face, Sabu. He was dead plumb. Was playing across the line and wasn't in the line of that delivery. He was a bit tired and but what an inning from him. A brilliant inning has come to an end. 55 off just 33 balls. The wicket. Hemang What a shot! Unbelievable! Ratnagar Pandey. a shot. He had played a very difficult shot in a very easy manner. Probably he has played a shot of the day so far. And of the very next delivery, he comes at the non-striker's end. Tussle Invaders. They are a dangerous team. They have a very destructive batsman in the batting lineup. One after another. Another catch practice for Prashant at cover and Hemang Nadkarni. You cannot keep him away from taking wickets for long. One after another. You need a wicket, throw the ball at him. He will deliver for you. He has been doing it for his team, for his captain throughout the tournament. And once again, he is doing the same. Second one for him in this over. Twelve overs gone. It's 112 for 3. 52 required of 48 balls.
And the kind of over Saturn Warriors needed, Hemang Nadkarni has delivered one. And they need many overs like that. Ramesh into the attack. And Ratnagar was looking to take him on of the very first ball he bowled in this over. Has it come off any part of the batsman? No, it has not. It has gone down the leg. And probably the wicket keeper, his view was blocked by the batsman's. 5 runs added to the tally, 112 on the board. Hello, hello. So the left-hander is at the strike, Gaurav, alongside his partner Ratnagar, who is at the non-striker's end. Lovely delivery. As we did mention, he doesn't bowl too many leg spinning deliveries. Bowls lots of googlies. And this one was bowled around the sticks to the left-hander, which went away. As soon as the ball was pitched around the pads of the left-hander, huh? Oh, तो डॉट बॉल लागतो ना नाही हाँ 13 overs gone. It's 123 for 3. Now invaders, they need 41 of just for 42 balls. Now the asking rate is well below 16 and over. गेंदबाजी करने और बहुत ही बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले का टाइमिंग बहुत ही बढ़िया, लेकिन गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के हाथ में। मात्र 1 रन लेने का मौका, और यहां से बहुत मुश्किल कार्य नहीं रह चुका है इन्वेडर्स के लिए। वहीं पर सैटर्न वॉरियर्स को अब गुच्छों में विकेट लेने होंगे। अपील की जा रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने इशारा किया है कि पैड से जाके टकराई ये गेंद। बल्ले का कोई भी हिस्सा गेंद से संपर्क नहीं हुआ। रत्नाकर पांडे बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं, ये मध्यम क्रम में आज बल्लेबाजी करने आए हैं। बहुत ही तेजी से बल्ला चलाते हैं ये, और जब तक ये क्रीज पर रहेंगे गेंदबाजों के लिए चिंता का सबब बने रहेंगे ये बढ़िया गेंद
और हर्षल भी कम नहीं है, इन्हें पसंद है चैलेंज लेना। और उस गेंद को फेंकने के बाद आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह दिया उन्होंने बल्लेबाज को। और ये लीजिए, ये है जवाब रत्नागर द्वारा। पिछली गेंद में अगर गेंदबाज का बोलबाला था तो इस गेंद में बल्लेबाज ने अपना धावा खोला है। और ये लीजिए, ये है जवाब बड़े रत्नागर शॉट द्वारा। खेले के लिए जाने जाते हैं ये, और उसी रेपुटेशन के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस पारी में 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए ऑलमोस्ट एक्शन रिप्ले हो रहा है। ये पिछली गेंद, पटकी हुई गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में एक बार फिर हाफ ट्रैकर की ये गेंद, और नतीजा वही हुई। सभी खिलाड़ी गेंद को देखते रह गए और गेंद बल्लेबाजी करते हुए इस पार्क से, इस ग्राउंड से बाहर जाती हुई। अब जल्दी जल्दी इस मैच को खत्म करना चाह रहे हैं रत्नागर। क्या बल्लेबाजी हो रही है ये! तो ना सिर्फ शक्ति प्रदर्शन, ये गैप ढूंढना भी बखूबी जानते हैं। अच्छी गेंद पे 2 रन बटोरे हैं। 14 ओवर का खेल पूरा, एक महंगे ओवर का समाप्त होता हुआ, अंत होता हुआ। 14 ओवर के बाद स्कोर है 139 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब इन्वेडर्स को जीत के लिए चाहिए महज 25 रन 36 गेंदों में। This is not a good line to bowl to the batsman likes of Ratnagar, and especially when you're bowling from the media end. The square leg region and the point region, they are the shorter boundary. Anything on the bat, it will race away to the fence. Inside edge of the bat goes on the onside, fielded by the wicket keeper. Harshal. कौन है? अजिंक्य, who is the bowler? अन्नत हा, आता अपडेट झाला. एक पण बॉल अपडेट नाही केलेला. Catch it is the shout, and it has been taken. Annath, he strikes, gets rid of a big man. The dangerous looking Ratnagar goes back to the pavilion. He's off to the hut. 26 he has scored off just 12 balls with the help of a boundary and a 3 big maximum. Saturn Warriors, they are elated. They are delighted after that wicket. They have sensed an opening here. Do we have a twist in a tail?
Ratnagar. They need to keep chipping away with the wickets. 4 wickets down already. और इसी रेपुटेशन के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस 22 पारी में required of 33 balls now. से बल्लेबाजी करते हुए एक और मैक्सिमम ऑलमोस्ट And now the new batsman in is Paresh, the skipper from Invaders. Hello. 142 for 4 after 15 overs. 22 required of 30 balls. .22 required of 30 balls. Shekhar is the bowler. He has proved to be an expensive so far. 29 he has conceded. Once again, batsman goes aerial and ball falls into the no man's land. Paresh. He is new at the crease. And this wicket, it hasn't been friendly to the batter who is new at the crease. If the bowler is wise enough, shrewd enough to deceive the batsman with his variation, with his pace. And these are the kind of deliveries where a batsman can do nothing about. This one didn't rise at all. Paresh, he was just pointing at it. Good delivery. As we just mentioned, though Paresh is a good batsman, but because he is new at the crease, playing with a very minimal footwork, was looking to play a fancy cover drive, but he wasn't covering the line of that ball. That was the one reason why he missed out on scoring opportunity.
This is good bowling by Shaker. Troubling a good batsman at the moment, making the batsman commit a mistake. At this time, it has been driven firmly. One run taken and they will be come back. They will come back for two. So with a couple of runs of the last ball of the 16th over, invaders are at 145 for 4. Now they are just away, 19 runs away of 24 balls from a victory. 19 required of 4 overs. Umpire has his arms extended. It means it has not come off any part of the batsman. Wide plus 4 runs. As far as I remember, this happened second time. 26 extras conceded by Saturn Warriors. With that boundary, it's 150 up for invaders. $150 for 4. Only 14 runs away from a victory. This could be the first one for Saturn Warriors. It flies and falls short of the fielder at third man. Shaker did well to stop the ball and also the batsman to take one. 13 of 22 balls. Will Paresh good bowling by Annath Raj, bowling his second over. Batsman, they did fancy their chances to take him on to play some big shot against him and ended up paying the price. Once again, it has beaten everyone. Annath Raj, he has a strong arm, a strong lad. Hits the length hard, hits the deck hard, but this one, it was a full toss. It pitched just before the wicket keeper, and he is looking in trouble. He is looking in a pain here. He really hasn't had a great day behind the stumps, and he's struggling to stand on his foot at the moment.
A change of a wicket keeper here. Ajinkya is standing behind the stumps with the glove. 12 runs away from a victory. Invaders of 20 balls. Beautifully played on the onside. No fielder at square leg region. It's a first boundary for Gaurav, the left-hander. He was waiting for it. It was bowled onto his body. On the onside. It was an easy picking for him. And that's a wicket. After being struck for a 4, bowler bowls with an extra pace here. The line was terrific, length was brilliant. And the bells are off, stumps are disturbed. And that's Gaurav gone back to pavilion after scoring. Only 9, 17 gone. It's 156 for 5. और अब जीत के लिए चाहिए मात्र 8 रन 18 गेंदों में। गेंदबाजी के लिए तैयार हैं हेमंत नाडकर्णी, जो कि अपने 3 ओवर में दिए हैं 26 रन, 2 विकेट प्राप्त हुए हैं उन्हें। और बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑलमोस्ट छठे या 7वें स्टंप पर पिच होती हुई गेंद। अपने कलाई और उंगलियों का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करते हैं हेमंत नाडकर्णी। गेंद में गति बिल्कुल भी नहीं देते हैं। बढ़िया शॉट और बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा। मात्र 1 रन लेने में कामयाब रहे बल्लेबाज। अब 7 रन की जरूरत है। देखना होगा कि बल्लेबाज इसी ओवर में ये मुकाबला समाप्त करते हैं या ये आगे भी कुछ ओवर तक ले जाएंगे इस मुकाबले को। और ध्यान रखना होगा दोनों ही टीम को कि नेट रन रेट जो है बहुत ही अहम किरदार निभाने वाला है आने वाले समय में। खराब ये गेंद, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। तो एक जो स्पॉट है वो गुड लेंथ के थोड़ा सा आगे, वहां से गेंद बिल्कुल भी उठती नहीं है। और ऐसे स्पॉट जो होते हैं, हमने अच्छे बल्लेबाजों को, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो होते हैं उस स्पॉट पे जाते हैं, थोड़े बैट टैप करते हैं और फिर वापस आते हैं, चेक करते हैं उस स्पॉट को वो। तो पिछली गेंद अगर ऑफ स्टंप के बाहर तो ये लेग स्टंप के बाहर। विकेट कीपर उस गेंद को रोकने में नाकामयाब और 5 रन जुड़ जाएंगे टीम के खाते में। तीसरी बार हुआ है इस पारी में जहां पर वाइड के साथ 4 रन मिले हैं इन्वेडर्स को। ये काम आसान कर दिया है और स्कोर लेवल हो चुके हैं। सो द स्कोर्स आर लेवल।
Will Shadab go for a glory shot here? Well, he was looking to go downtown. Inside edge of the bat, and umpire denies the appeal from the bowler. Another one didn't bounce at all. And because the bowler Hemang, he doesn't give a lot of pace. Another play and a miss. Shadab. He wants to play a winning shot, probably a boundary to score off. And in that effort, he played 2 dot balls. Make it 3 after that. This is good bowling from Hemang Nadkarni. He has not given up yet. He will not let you score easy runs. Take that into the block hole, and they are looking for a single. Run out opportunity at the striker's end. And it will be batsman falling short of his crease. Excellent cricket from Saturn Warriors. Paresh, he wasn't interested at all to take that run. He was looking at the ball. Shut up. He was almost halfway through. He forced his keeper to run for a single, ended up throwing his wicket. What an over. This is good spirit, good fighting spirit shown by Hemang Nadkarni. Only a single needed, and he bowled 4 dot balls on the trot. "18 overs gone. It's 163 for 6. Only a 1 run required to get the winning points for the invaders. And to do so, well, they have got a wide. Though it has gone to the boundary, they will get only a single. Take that into the block hole, and they are looking. So the Tussle Invaders, they have won their 4th match out of 6 they have played so far in this tournament. And Saturn Warriors, they have been undefeated so far playing the game before this. They got to taste a defeat here.